कि घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में 4 लोग हैं। ठीक है, आप शादीशुदा हैं? जी, ठीक है। उनमें से भाई-बहन कितने हैं आपके? साथ रहते हैं या अलग रहते हैं? नहीं अलग रहते हैं भाई-बहन। ठीक है, उनमें से किसी को कोई इस किस्म की बीमारी, कोई भी और मसला? नहीं किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। वो सब ठीक है। सेहतमंद। माँ-बाप हयात हैं? नहीं माँ-बाप का याद नहीं। उनमें से किसी को कोई इस तरह की बीमारी थी या कोई और मसला या नेचुरल डेथ थी? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ थी, ठीक है। अच्छा, आपको भूख वगैरह ठीक लगती है? वज़न आपका कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ है पिछले दिनों में? वजन भी कम नहीं हुआ है, भूख भी सही लगती है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि किसी चीज़ से एलर्जी या किसी चीज़ की आदत हो, एडिक्शन हो आपको? नहीं कोई ऐसा वो नहीं है। पान नींद सही सिगरेट। आती है? नींद भी ठीक है। नींद ठीक आती है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपकी शख्सियत में पिछले कुछ अरसे में तब्दीली तो नहीं आई कोई? हम्म, नहीं पेन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ, अदरवाइज तो और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये मेमोरी बिल्कुल ठीक है, याददाश्त ठीक है? जी वो ठीक है। घर का याद। रास्ता आपको याद है? बिल्कुल? जी। सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सुबह नाश्ते में मैंने अंडा और स्लाइस। ठीक है, नज़र कैसी है आपकी? नज़र के लिए मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ जिसके साथ सही है नज़र। ठीक है। ग्लासेस के अलावा कभी कोई और नज़र का कोई मसला तो नहीं हुआ? नो। ठीक है। मुझे ये बताइए कि खुशबू, बदबू महसूस होती है, इस तरह का तो कोई और मसला नहीं है? जी बिल्कुल ठीक। सुनने में बिल्कुल सही आता है? सुनना बिल्कुल सही है बिल्कुल। निगलने में, खाने-पीने में कोई और तकलीफ़, कुछ भी, कोई भी और खाना मसला? पीना बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी और ऐसी तकलीफ़ जो मैंने आपसे ना मालूम की हो लेकिन आपको रहती हो? नहीं बस यही मेन तकलीफें थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है। पेशाब में जलन तो नहीं है साथ में? पेशाब में जलन नहीं है, वो पता ही नहीं चलता। ठीक है, आपको महसूस नहीं होता। ठीक। जी। इसके अलावा साँस लेने में कोई दुश्वारी, दिल की धड़कन कानों में महसूस होना, इस किस्म का कोई भी मसला? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है। सर, आई एम डन विद माय हिस्ट्री। आई वुड लाइक टू प्रोसीड फॉर द एग्ज़ामिनेशन। ओके सो कैन यू शो द स्लाइड फॉर एग्जामिनेशन। और अगर डॉक्टर बाबर आ गए हैं तो फिर वो अपना वो रोल वो कर लें, संभाल लें। जी, सॉरी सर, नेट क्या इशू था? अच्छा वो उस पे लेट्स कम टू द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड शी विल ऐड टू व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग प्रेजेंटेड टू हर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। सर, फॉर्मेट ऐसा है कि डॉक्टर कंवल अभी बताती जाएंगी कि वो एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगी पेशेंट में। उसके बाद हम ओके उनको फाइंडिंग्स बताएंगे। चलें। Sure, सो sir. लेट्स सी के व्हाट डू यू वांट टू एग्जामिन। Okay, so since this is a It long should be case. a focused examination. Okay, so after a very quick general physical examination, assuming that my patient is fully conscious and oriented, vitally, subvitally normal, I will proceed to the relevant examination first and do rest of the components later. So for relevant Mm-hmm. examination, I'll start with the lower extremities first. I will do Okay. the I will expose the patient up to the inguinal region, keeping Mm-hmm. his privacy in context, and I will inspect it for any marks or any scar marks, any pigmentation, etc. And I will also check bulk at this point, assuming that I don't know if it is normal or not. I'll also check for fasciculations at this point, and afterwards, I'll check for the tone bilaterally at both hip joints, both knee joints, both ankles, and then I'll proceed for the motor component. I'll check for all movements at hip, flexion, extension, adduction, and abduction very quickly. Then I'll check for the knee movements, flexion and extension. Then I will check the movement at ankles, dorsiflexion and plantar flexion. And then I will check the flexion of the big toe. After that, I will check the What effect on the victim? Okay. uh, Okay. is- okay. Then I will proceed to a quick sensory examination, following the patterns. For L1, I will check the upper thigh. For L2, I will check mid of the thighs bilaterally. For L3, I will check the kneecaps bilaterally. For L4, I will Mhm. check both medial calves. For L5, I will check the lateral calves and bilaterally. For yes, L5. And then for S1, I will check the lateral margins of the foot bilaterally.
At this Okay. point, I will also check the pulses of both the feet. Then I will check the plantars and reflexes. Assuming I'm not sure if the patient has clonus or not, I will also see for it. And then I will do a quick joint position sense on two bony prominences, ideally medial malleoli on both feet. And I will ask the patient about pain and temperature, pain via pinprick and temperature via the specific metal thing we use if he feels the temperature or not, to rule out any dissociative sensory loss. After that, I'll also do SLR and Faber, uh, because I don't know the reason for his presentation. And after that, I'll turn my patient on the back and do a quick inspection of the back, followed by my palpation, along superficial palpation along the entire spine, to see if I can sense any visible deformity. And then I will follow for deep tenderness by using light pressure या punches जिस तरह से हम use करते हैं, to see if there is any deep tenderness. And then at this point, I will ask the examiner if he, I'll ask you if you want me to check the perianal sensations myself, even though the patient has complained that he does not feel any sensation down there. And I will also ask for DRE to So at check this the. point, I'll tell you that there is loss of perianal sensations bilaterally. Okay, I will also check for DRE You at this don't need point. to. You don't need to do the DRE and the perianal sensation test. Okay, okay, sir. Okay, and then I And will in DRE, just. the anal tone is lax, and the contraction of the anal sphincter, voluntary contraction, is weak. Okay, voluntary contraction is weak. Fine, I'll proceed my examination upwards. I'll do the upper abdominal reflexes, upper and lower abdominal reflexes, both levels, quickly. And then I will extend my examination to the other systems. I'll evaluate the upper limbs in the same systemic fashion. Do you want me to go bit by bit for the upper limbs as well? It's your choice because I've asked you to do a focused examination based upon the history. Okay, so I'll keep two focused examinations more. I would, yes, I would do a quick survey of the upper limbs by checking the hand grips bilaterally. I will also check pulses and pronator drift of this patient, and that will evaluate if this is an upper motor neuron problem. Given that the planters were upgoing, I don't know yet, and I will also check for gait in this patient. I would like for him to walk first normally to see how he's walking, if it is antalgic or if there is any visible foot drop or anything. And afterwards, I will ask him to do a tandem walk, and then I will ask him to close his eyes so that I can assess the Romberg's test. And I think that would be my focused examination. I will also quickly check for I might check for nystagmus, but I don't think if there will be any signs, and it would not be relevant. But it's a long case, so if it was in the exam, I would have So done you all the mean to say that marks. you won't go for the cranial nerve examination at this point? Sir, I would afterwards, because this is a long case, so I will do a complete examination, obviously. Mm-hmm. So So, yes. after I have scanned very quickly for through the upper limbs for this patient, I will move on to cranial nerves. I will assess the olfaction by checking the nasal patency, and then I will also assess the olfaction via using a perfume. After that, I will move on to cranial nerve 2. I'll start with visual acuity. Since he has commented that he uses glasses, I'll do a quick visual acuity check. Then I will check for fields by confrontational method. After that, I will do pupillary light reflex on both eyes, both the direct and the indirect reflexes. Then I will do a fundoscopy. After that, I'll check for extraocular movements for all the muscle groups. Then I will move on to cranial nerve fifth, checking the. I'll begin it by checking the sensations bilaterally on the face in all three dermatomes: forehead, cheek, and then jaw. Then I will check for coarse touch as well. Then I will check corneal reflex in bilaterally.
After that, I will check the motor component, temporalis muscles and the masseter muscles, and I will check the jaw jerk. After that, I will begin with the lower cranial nerves, quickly assessing hearing via whisper test. If it is normal, I might not proceed for Rene and Weber, since patient does not have any complaint. After that, I will check for the, sorry, I have missed facial nerve. I'll ask him to look upwards to check for wrinkles. I will also ask him to close his eyes tightly and try to open the eyes. I will then ask him to fill up air in his cheeks bilaterally and then check if he can maintain the tone. After that, I will go for the ninth and 10th nerves, inspect the oral cavity thoroughly, seeing if there is any fasciculations or atrophy wasting on the tongue, if the uvula is centrally placed, and then I will ask you to assess if you want me to check the gag of this patient. And if you do, then I would check it bilaterally on the bilaterally, I mean, gag reflex. After that, I will check for the movement of his neck, as in, I will ask him to turn his head against resistance on both sides, and then I will ask him to shrug his shoulders, and then I can proceed for my cerebellar examination. Okay, so are you finished with your examination? Assuming that I scanned through the cerebellar examination, yes, nystagmus and finger nose testing, dystiodocokinesia. And since I've checked dystiodocokinesia, I don't think there will be need to check Hielchen, and Romberg's I've already done. Okay, so let's see the examination findings now. Okay. So these are the examination findings. Okay, so power is reduced bilaterally 4 plus by 5. Reflexes are normal. Sensory is inconclusive. Patient can walk but with support only. What about tone and what about planters? Tone is reduced, planters are mute. Planters are mute Mute. Tone is reduced. and And there is, as I have already told you, the anal tone is reduced, and there is bilateral loss of perianal sensation. okay. Perianal sensation is lost and anal tone is reduced as well. Okay. Okay, sir. So what is your differential diagnosis? Tell me at least three differential diagnoses based upon the history and examination. Okay, so since it is low back pain and planters are mute, tone is decreased, perineal sensation lost, this is most likely conus or cauda equina region. I will localize my differentials to that place. What lesion? What And lesion? uh, Why so, conus? Okay, just let me first know the three most probable differential diagnosis. So first differential diagnosis is uh, since it's pain and severe pain, it says his age group is in the gray zone. It could be degenerative, it could be neoplastic, both. so what is your first differential diagnosis based upon what information you have been given with? How was the SLR of this patient? SLR is reduced bilateral. SLR is reduced bilaterally. He's a 40 years old man, degenerative. Uh, I would keep second, neoplastic, I would keep first. Okay, Degenerative would be a very close differential, though. so you are going to place the neoplastic etiology, neoplastic, for example. Uh, since it's a long history, it would be It's a six a months benign. history. No, sir, it's a 2 years history. Low back pain It's is a for 2 year last. history and Yes, 6 months urinary complaints. yes, 6 months. May the complaints have been very progressive. Neoplastic, mean this would most likely be a benign lesion.
For example, For example, either benign or at least slow growing, low grade. so most of the benign lesions are slow growing, isn't it? Uh, yes, sir. I get that. So, for example, just name one lesion so that we can move to the other differential, save your time. Conus and cauda equina region में sir benign lesion में या at least slow growing lesion में myxopapillary is most common. Myxopapillary is a Papillary, what? myxopapillary ependymoma. Myxopapillary ependymoma. So you are placing myxopapillary ependymoma first. And Myxopapillary ependymoma. it could be a schwannoma as well, but the patient You are placing the schwannoma on the second on list. uh, I am not exactly sure, sir. It can be schwannoma on top as well. Which one, schwannoma or myxopapillary? Sir, the location is very particular for myxopapillary, but How do you know the location? How do you localize? It's a low so, back pain with uh, urinary complaints, yes, and sir. on examination, it's Plantars 4 are by mute, 5 sir. power, 4 by 5 power with Yes, reduced sir. aldosterone and perianal sensation. I localized it on the base of decreased perianal sensation, decreased anal tone, and since the plantars are mute, it most likely is a cauda equina or less likely conus region. Conus may I might have If found you are plantars saying approved. bonus, we are at the other time you are saying cauda equina. Which one? Uh, you have got me in a tiff, sir. I think I will go with cauda equina. Cauda equina. Okay, cauda equina myxopapillary ependymoma first or schwannoma first? If it is cauda equina, it is. Uh, but the pain was radiating downwards. We'll Uh, discuss the reasons afterwards. First of all, you yes, have sir. to give me a list of 3 most probable Sir, if differentials. it is cauda equina, it will be myxopapillary ependymoma first. If it is a cauda equina, then it will be a myxopapillary ependymoma first. Okay. Yes, schwannomas can involve the lumbar region, but myxopapillary will still be on top. So any other differential? Yes, sir. Myxopapillary ependymoma, schwannoma, and And sir, degenerative. for example, It could be uh, very well a large central disc or a central lumbar stenosis as well. Even though he's 40 years old, it's not as likely, but it can be. any other. And since there was no So history you've of. given me a list of 3, I think. I think Yes, you have sir. already given me a list of 3. Okay. So you don't want to add to this list. Uh, yes, sir. Okay, so let's justify why have you put the myxopapillary ependymoma of cauda equina first, of cauda equina. Uh, By the way, what is the origin of myxopapillary ependymoma? so myxopapillary ependymoma usually originates from the. It's an ependymal tumor, sir. It encases the So, so rootlets. It's around the rootlets. do you Phylum. have rootlets in the do you have ependymoma on the rootlets? Ependymomas, sir, Do you sort have of. ependyma? Do you have ependyma on the rootlets? Ependymal layer on the rootlets? Uh, I am not sure, sir. I'm not sure. You're not sure. Can a myxopapillary ependymoma arise from the rootlets? It does not arise from the rootlets, sir. Then from where it arises? It arises from the ependymal lining, So where is that ependymal line? sir, around the thecal sac. Around the thecal sac. You mean outside the dura? No, within the thecal sac, I mean. Within the dura? Within So the you dura, mean sir. so Within you the. mean it's arising in a meningioma-like fashion from the dura, from the No, arachnoid? sir. Within the arachnoid as well.
It's not outside the arachnoid. It's within the No, arachnoid. you are saying that ependymal layer is inside the dura, lining the inside surface of the dura. That's what you are saying. Uh, I I think, sir, it would arise within the arachnoid. What is the I'm sure. layer next to the dura? What is the meningeal layer next to the dura? That's arachnoid, sir. Arachnoids. Yes, Can sir. an ependymoma arise from the arachnoid? No, sir. Where do you find ependyma? Sir, mostly they line ventricles. Sometimes they line the nerve root sleeves as well. I'm not sure. You are not sure. Okay, you are Yes, sir, not I'm sure. not sure. I'm not sure. Right. So, do you want to defend the diagnosis of myxopapillary ependymoma of Kodak equina? Sir, then again, I'm not sure which one it might be. It could You are be not sure. a myxopapillary ependymoma. It could be a schwannoma, both because the pain was also radiating Okay, so downward let's defend the bilaterally. diagnosis. Let's defend the diagnosis of a schwannoma. Okay, sir. So schwannomas arise from the dorsal sensory rootlets, Mm-hmm. and their pain characteristically follows a radicular distribution. Dorsal sensory rootlets. They do not arise from the ventral rootlets. Sir, less likely. No, they don't. The schwannomas, I'm sure about. Schwannomas arise from the dorsal sensory rootlets. Okay. And their Proceed. pain characteristically radiates, but Okay, proceed. You have already been given the information that it's bilateral lower limb radiation. yes, sir, their So pain follows a you are radicular pattern. defending the diagnosis of schwannoma. Yes, sir. It So how is, do you defend the diagnosis of schwannoma? sir, it follows a Save your time. radicular Be pattern. quick, And save your time. sorry, sir. Be quick, save your time. Okay, so schwannomas, they have a characteristic radicular pain distribution, and yes, and since the pain is radiating, it can also be a closed differential. Okay. How do you defend the diagnosis of a degenerative etiology, like, for example, a lumbar disc, which you have put on the third place? Sir, I wanted to say a large central disc, which is big enough to cause Kodak-Vana syndrome, or a central stenosis. Central stenosis and disc both, or a disc or stenosis? I would keep a large central disc because central stenosis Large central may, disc. yes, sir, Large. because central stenosis may, the patient will not complain of radicular pain bilaterally. Acha. So how do you defend the diagnosis or exclude the diagnosis of a degenerative cause? Sir, the only thing that is not in favor is the age group. 40 is still very early for a large Mhm. lumbar disc. That's one thing. And also, the pain is extremely severe, which is radicular pain can be severe, but it's not severe to the extent that the patient has been telling. What other finding in the history is keeping you away from a degenerative cause? Um, you said SLR was normal, right? What other finding in the history is keeping you away from a degenerative cause? Um, in the history, I don't remember any significant You pointer, sir. you asked that question I from the asked patient. about the diurnal variation. Yes. So what is I that diurnal variation? Sir, he said that the pain does not follow a specific time pattern. It is there all the time, but it's very severe. It's very severe at what time? He didn't say that it was severe at night He time. did. He did. He did. Oh, I might not have Right. listened. He I said that when I lie down in the bed, it's very severe. It doesn't keep oh me he did. lying in the bed. He didn't mention the He did. time. Yes. Yeah. Yeah. I get that. I get what you're trying to say. Yes. So nocturnal pain is very characteristic for spinal tumors. It's not Okay. associated with the degenerative spine So, disease. so how do you defend the diagnosis of degenerative
disc? I would keep it as a third unlikely differential answer. Okay, so let's proceed. How will you manage this case? After the complete history and examination that we have already taken, I will want an MRI, lumbosacral spine, but also the dorsolumbar junction, including the dorsolumbar junction as well, Mhm. um, to rule out whether there is a lesion around the conus or cauda equina. Just MRI. MRI, dorsolumbar junction along with lumbosacral spine, obviously, with contrast With and contrast. with contrast, yes. And Why with contrast? with contrast because I want to see if there is any lesion. Okay, so let's see the MRI. Can you please show the MRI? Okay, so can you please describe the MRI? There are Okay. two images, one beside the other. Can you please describe? Yes, sir, I can. It's a sagittal section. Which image are you describing? I'm Image describing. on the left of your screen or image on the right of your screen? I'm describing image on my right, left of the screen On the left first. of your screen. Okay, so let's see what this image shows. The image on the left of your screen shows. It shows. Sir, I cannot be sure about the level because it's not giving me a localizing Okay. level. Might be L5, L4, L3, L2, L1. So if Around. I assist you, the lowest level visible, lowest disk visible is L5S1 disk. Yes, sir. I am assuming that it is L5 S1, L5, L4, L3, L2, L1. So this is a lesion extending from L1 to L3, upper border of L3 in the sagittal section. And it looks to be a well circumscribed lesion blocking the CSF flow. No, yes. What is the best sequence to see the CSF flow or to This, see the CSF? You are describing the image on the left side, isn't it? yes, sir, I am. Or you have shifted towards the image on the right side? Sir, I am not sure about the right and the left. Uh, Image on the left side of my screen the is the one also that is on the left side of your screen, isn't it? the the one with the arrow right now. I think The it one would with the be. arrow is on the right side of my screen. Oh, okay. Okay, sir. So I am describing this. You are describing the image on the right side of my screen. Okay. Yes, sir. I am. This shows a well circumscribed, a well defined lesion from L1 to L3 on the sagittal section MRI. Hmm. This is a T2 image, and I can see there is mixed signals within the lesion, and it is completely occupying the theca. Completely occupying, yes. Okay. Any other comment on this lesion? Sir, below the lesion, I can see that the CSF uh, is sort of completely filling up the sac. I would like to see the axial section to comment more. Axial sections, before axial sections, would you like to comment further on this image also? Whether The it's which compartment of the spinal canal do you think that this lesion is located in? Sir, it will be. Uh, Do you know the compartments of the spinal yes, sir. canal? Yes, sir. I know. It will be the intramedullary compartment, then the intradural extramedullary compartment, and then the extradural compartment. But Okay, it so would be. what do you think this lesion's location is likely to be? So it is completely filling up the theca, and I can't see theca at all. So it is most likely intramedullary, but I would like the axial sections to comment definitely. Okay, so let's proceed towards the other images. Don't you want to see the T1 weighted image? Yes, sir, I do. On T1 weighted image,
this lesion is not as easily discernible. It's not visible enough for me to comment properly. Okay, so let's move to the other images. Can you please describe this image? Okay. I'm assuming this is post contrast images. Why are you assuming? Why are you not Sir. sure? Yes, I'm sure it's a post contrast image Why are of you the. sure? Sir, there is contrast uptake within the lesion, and the CSF signal has changed to T1 again. So it's a T1 Why are post you sure contrast that this image. is a T1 post contrast? Yes, so this is T1 post contrast image. Why are you sure that this is T1 post contrast? Uh, because I can't see the CSF first, and then I can still see the lesion, which was not initially visible on the T1. अच्छा चलें ये T1 post contrast है अब describe करें so, Okay, so the lesion is corresponding to the same location, L1, L2, L3, and it is showing heterogeneous contrast uptake, and it looks to be well defined. Again, okay. completely filling the theca. No, no, what is likely to be the lesion? What kind of lesion? So this is most likely a myxopapillary ependymoma. Any other differential? Uh, could be another type of ependymoma and intramedullary. No, sir, I don't think. Can this be an intradural extramedullary tumor? Less likely, sir, because intradural extramedullary tumors. You are asking if myxopapillary is an intradural extramedullary? No, no. I'm No, just asking for any other differential. You are just thinking around myxopapillary ependymoma. sir, it could be an extra medullary intradural tumor, but that compresses the theca or the cord on one side, which I can't see. And for to comment indefinitely on that, I would need the axial sections to see if the cord is compressed to one side or something, or sorry, theca at this level, conus. In this section, can you see any other thing which leads you to a diagnosis of myxopapillary ependymoma? Uh, I am not sure, sir. You are not sure. Do you want to see any other images? Yes, sir. I want to see the axial sections. Okay. So do we have axial sections? I think we do not have axial. Yes, we do. Can you please describe these axial sections starting from the image on the left side of your screen? When you are facing the screen, your left side is the left side of the screen. Okay, sir. It is an intramedullary lesion, sir, which is completely filling up the theca, and it is contrast enhancing. The How do you enhancements. describe any image? I'm sorry, sir. I'm sorry about that. So these are axial sections. I'm describing the image on my right first. Just a second. Okay, so these are axial sections of the. You'll have to be quick because you are short of time. Yeah, yes, sir, sure. So these are the axial sections of the same corresponding lesion, and I'm describing the T1 post contrast image showing the lesion, which is heterogeneously enhancing, yes, and it is completely filling up the central canal, and I cannot differentiate theca or conus here at this point. It's completely filled. So do you still want to stay on the diagnosis of mixed papillary ependymoma? Uh, yes, sir, I would. It's You it's would. not it's not a meningioma, and it's definitely not a schwannoma because it's not Why extending. definitely not a schwannoma? Because sir, it's not extending up to the roots. It's not arising from the roots. It's centrally placed. How do you Schwannomas know arise it's from not the. arising from the roots? Sorry, sir. How do you know it's not arising from the roots?
If it would have been arising from the root, sir, there would have been at least some foraminal widening, and I would see the roots enhanced as well. Uh, Okay, so this is the lesion, which is extending from L1 to L3, yes, sir. and it is intradural. We are not sure whether it's intramedullary or extramedullary, but it's intradural. Okay. How would you further manage this case? Okay. So we are not sure about the lesion histopathology, obviously. So I We will. can't do because we haven't yet Yes, sir. Yes, sir. biopsied this thing. So after all the baseline investigations, and after counseling, adequate counseling of this patient, telling him that we will proceed for the surgical excision of this tumor, and the prognosis, the recurrence, and the definite diagnosis will depend on the surgery as well. I will also counsel him about the possibility of worsening neurologic deficit in this patient. I will also roughly counsel him about the other complications that might happen, and then I will proceed for surgical excision of this tumor. Okay, the patient is asking कि डॉक्टर साहब मैं सर्जिकल एक्सेशन के बाद क्या ठीक हो जाऊंगा? ये जो मेरा कमर का दर्द है और जो मेरे पेशाब के कंट्रोल में खराबी है, ये सही हो जाएगी? Okay, so do I have to counsel you assuming that you are my patient? Yes. Okay. अ, देखिए, जब तक हमारे पास जो रसोली है, इसकी बायोप्सी नहीं आती है हमारे पास, हम मुकम्मल तौर पे कह नहीं सकते कि ये किस नौइयत का ट्यूमर है। तो उसकी वजह से यकीनी तौर पे कुछ भी कहना इस वक़्त मुमकिन है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि ऑपरेशन के बाद जो आपके कमर में दर्द है, वो तो बेहतर हो जाए, लेकिन जो चलने-फिरने में कमज़ोरी है और जो पेशाब का आपको मसला है, वो कुछ अरसे तक रहे। और एक बहुत Good. Okay. So you are planning the surgery. यस सर, आई एम Plan the surgery. Plan the surgery. ओके। Sir, for this lesion, because this is involving the conus, I would need neuromonitoring for this patient, most definitely. For neuromonitoring, I will proceed with total intravenous anesthesia because I would not be able to get MEPs and SSEP accurate levels otherwise. So, assuming So that which modality on the neuromonitoring, intraoperative neuromonitoring will you be depending most? uh, I will be depending most on MEPs, sir, because MEPs have MEP. an all or none response, and Okay. MEPs have all or none response. SSUPs only go down in the amplitude, so they are not very reliable in terms of motor deficit. Also, SSEPs mainly monitor the posterior column functions. I want Okay. to save. Tell me the steps of surgery. Okay. Assuming that the patient has received a total intravenous anesthesia, and I will proceed to place the patient in a prone position and padding the chest and all the other pressure points, keeping Since the you have abdomen. described total intravenous anesthesia, what is the main drug used during total intravenous anesthesia? Propofol, sir. Okay, proceed. Okay, so I'll keep the abdomen pressure free to reduce the patient's venous engorgement, and then I will expose the patient, prep and drape, and I will mark midline incision, extending one level above and one level below. Assuming this is L1, I would go to up to D12, and till L3. Yeah, L3, yes, because it was L3 upper border, the D12 to L3. Then I will take the all the monitoring, neuromonitoring baseline readings, and then I will start my surgical dissection. I'll open the incision in the midline, and then I will proceed for the subperiosteal muscle dissection on You by have done the laminectomy. You have done the laminectomy. Would you like to do the laminectomy or any other procedure for this case? um, we are extending 3 levels. Laminectomy might cause kyphoscoliosis later on because we are extending in the uh, exposure from D12 to L3.
So I would like to do a laminoplasty, not laminectomy. Okay, you have done an osteoplastic laminoplasty in this Yes, period. Now what? yes. Now I bring my microscope in. I'll identify the dura, and I'll open the dura in the midline. After Okay. opening the dura, I will What also. precautions will you take in opening the dura? Sorry, sir. What precautions would you take in opening the dura? Since, sir, I will ensure that it is in the midline. Midline durotomy. Okay. Any other precautions? I would avoid any vessels as well, underlying vessels. Underlying vessels. चले आगे बढ़े. Okay. I will then proceed for arachnoid sharp dissection. And then I will, under the microscopic guidance, uh, I will identify the tumor, since most likely. So just give me a minute to compose the steps in my head. After I open the You open the arachnoid, dura. You have opened the dura. Now you have yes, visualized the tumor. Now what? yes, I have visualized the arachnoid. I have opened up the arachnoid, put up the, if there is, I will also take the Teckup sutures here, and then I will identify the tumor, and I will start the overlying devascularization. Also, myxopapillary ependymoma needs to be resected and block. That means that I cannot open the tumor capsule. I will have to proceed for all the dissection in an extracapsular manner, making sure that I do not damage any nerve rootlets around which are adherent to it, and also During keeping an eye. dissection जो आपका न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है उसने कहा कि डॉक्टर साहब राइट रेक्टस फेमोरिस में सिवियर इरिटेशन आ रही है. Right rectus femoris में severe irritation आ रही है. That means L2, L3 क्या maybe. करेंगे? क्या करें? Sir, I would reevaluate the surgical field to see if I have injured any a nerve root which was, or there is a traction on the nerve root. So I'll reassess it उसने कहा first. जी अब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी फॉल कर गया. Uh, as I said again, sir, I will reassess कि मैंने कोई नर्व रूट डैमेज तो नहीं की डायरेक्टली, या कोई ट्रैक्शन तो नहीं आ रही. सो आई stop my dissection for a minute and release all the traction that is on the nerve roots if there is any. और कुछ करेंगे इसके अलावा? इसके अलावा सर आई विल आल्सो आस्क हिम टू मेक श्योर इफ जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर राइट करेक्टली प्लेस्ड, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई ड्यूरिंग न्यूरो मॉनिटरिंग. और कुछ करेंगे? नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ सर अभी. अरे अब आपने जना ट्यूमर निकाल दिया उसके बाद क्या करेंगे? Sir, after the complete excision of this tumor, I will proceed for meticulous hemostasis, and I will also irrigate it and then close the dura in the watertight fashion, and then close the wound क्लोजर layer में by और layer. कोई सवाल था? और जी कोई sir. सवाल था? क्लोजर में और कोई सवाल था? Uh, Closure में sir, we just have to make sure if hemostasis is secured and the dura is closed primarily in a watertight fashion. If there for any reason I cannot close dura primarily, तो मैं आपने फिर बोन को क्या किया था? बोन को क्या किया था आपने? बोन को सर लेमिनोप्लास्टी की थी. क्या करेंगे फिर? सर I'll after closing the dura, जो लेमिनोप्लास्टी स्क्रूज होते हैं बीच में जो hinges लगाते हैं हम, to keep them open, I'll use them. अच्छा जी, पेशेंट जाग गया है. जागने के बाद आपने सीधा किया उसको 1.5 आवर के बाद इवेल्युएट किया, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट, ड्रग्स का इफेक्ट सारा जो सबसाइड हो गया, पेशेंट का राइट फुट ड्रॉप है और उसको सिवियर लेग पेन है. राइट फुट ड्रॉप है कैसे? और उसको सिवियर लेग पेन है, राइट लेग पेन. फुट ड्रॉप है, राइट लेग पेन है. दैट मीन्स के L4, L5 has gone. और कुछ? L5 has. और कुछ?
इसके अलावा सर इट कुड बी ड्यू टू प्रेशर एज वेल, प्रेशर प्रेशर कहाँ इंजरी भी हो सके। कहाँ? फुट ड्रॉप है और लेग पेन है सर, फिबुला, नी के पास। नी के पास। अच्छा, तो अब आपने बाद में उसके नर्व कंडक्शन दोबारा से करवाया तो पता चला कि जी उसको राइट कॉमन पेरोनियल नर्व की यस कंप्रेशन सर। इंजरी है। अब आप यस उसको सर। कैसे डायग्नोस्टिकेट करेंगे? Since this is a compression injury, I will advise the patient that it might improve in a few weeks' time. So I will give it 6 to 12 weeks. प्रोग्नोसिस कैसी होती है कंप्रेशन इंजरीज की? Compression injuries में sir prognosis depend करता है on the cause of injury. अच्छा जी, अब ये आपने हिस्टोपैथोलॉजी भिजवाई थी, उसमें मिक्सोपेपिलरी एपेंडिमोमा आ गया, ये कौन से ग्रेड का होता है? Sir, mixo is histologically it is benign, it is grade 1, but ग्रेड। yes, yes sir. अब आपने उसका पोस्ट ऑपरेटिव एमआरआई जब किया है तो उसमें एक स्लाइट रेजिडुअल ट्यूमर है, क्या करेंगी? I अब उसको would कैसे प्रोग्नोस्टिकेट Sir, I would करेंगे? आगे counsel the कौन से patient कैटेगरी? for I would counsel the patient for post-op radiation क्योंकि it is histologically benign लेकिन it has a higher recurrence especially if अगर residual रह गया है तो और कुछ करेंगे? um, अगर I'm not रेजिडुअल sure. है अंदर तो इसके अलावा कुछ करेंगे? रेजिडुअल है तो सर हम उसको रेडियोथेरेपी के लिए काउंसल करेंगे. कौन से ट्यूमर्स जो है वो सीएसएफ सीडिंग करते हैं? Myxo is one of them, sir. Apart from myxopapillary, we have other ependymomas. We have the high-grade gliomas, astrocytomas, and we have medulloblastomas. And yes, sir, mainly यही है. अच्छा, रेजिडुअल के साथ इसका जो रिकरेंस है वो कितना प्रिडिक्ट करेंगे आप उसको, पेशेंट को? Sir, gross total resection में इसका recurrence is less than 10%. But if there is any residual, the recurrence rate can be as high as 40%. ओके, तो आई थिंक द टाइम इज फिनिश्ड, तो मैं अब आपके उस पर कमेंट भी कर देता हूँ। जी सर. So, usually it's a good practice that at the end of your history, you should have at least 3 working differentials in your mind, at least 3. और जब आप Thanks. एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उन 3 वर्किंग डिफरेंशियल्स पर काम कर रहे हो, जैसे कि इसमें लो बैक पेन और फिर क्या कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और फिर वीकनेस। तो अब लो बैक Okay, sir. पेन के साथ ऑटोमेटिकली आपको फिर ब्रेन, सर्वाइकल स्पाइन, उससे हट के फिर लंबर स्पाइन में आ जाना चाहिए। And you should be first looking for a pathology in the lumbar spine. अच्छा, अब चूंकि होता ये है कि ज्यादातर लोगों ने केसेस पहले देखे हुए होते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है केसेस पहले से देखना। वो इसलिए कि आपका माइंड कुछ और सोचने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ये इसलिए यहाँ पे डेलिबरेटली ये चीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों ने केसेस पहले देखे हुए होते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि आपको पता होता है इस केस की फलानी डायग्नोसिस है, तो अब आप कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं होते कुछ और, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। एग्जाम में ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव चीज है कि आप कुछ और सोचने के लिए तैयार नहीं। तो अगर आप मुझे पहले शॉनोमा कहती तो मैं आपको यानी वो कर देता, छोड़ देता, बिकॉज शॉनोमा इज अ कॉमनर ट्यूमर एज कंपेयर टू, या मेनिंजियोमा इज अ कॉमनर ट्यूमर एज कंपेयर टू मिक्सोपेपुलरी एपेंडिमोमा। मिक्सोपेपुलरी एपेंडिमोमा इज अ लेस कॉमन ट्यूमर, तो हमेशा मोर कॉमन पैथोलॉजीज को पहले डिस्क्राइब करते हैं। या अगर आप ये भी कह देती कि ये एक डीजनरेटिव स्पाइन है विद सुपर इम्पोज डिस्क हर्निएशन कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम, तो अगर आप उसको पहले डिफरेंशियल में रखती तो मैं उसमें आपके मार्क्स काटता नहीं, मैं आपसे सवाल जवाब करता, और जैसे मैंने आपसे सवाल जवाब किए थे फिर मैं आपको आगे जाने देता। Sir, can I हाँ। humbly just add one thing? जी। I have not seen this patient or I have not known about the diagnosis. The only नहीं, reason I, मैं आपको एक बात बता रहा yes, sir. हूँ, मिक्सोपेपुलरी एपेंडिमोमा को एज अ फर्स्ट डायग्नोसिस करना, केटर करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है एग्जाम के अंदर। Even उसकी if sir रीजन, cauda equina या conus पे localize हो रहा हो लेशन तब भी? अच्छा, अब अगर वो कॉर्डा इक्वाइना है तो कॉर्डा इक्वाइना जो स्लोली प्रोग्रेसिव कॉर्डा इक्वाइना है उसका मोस्ट कॉमन कॉज मिक्सोपेपुलरी एपेंडिमोमा नहीं है, बाय द Yes, वे। sir.
Yes, sir. उसके ज्यादा कॉमन कॉजेज मौजूद हैं। ठीक है। जबकि बैक पेन पहले शुरू हुआ है, पहले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस शुरू नहीं हुई है, पहले बैक पेन शुरू हुआ है। Yes, sir. बैक पेन के बाद फिर स्लोली प्रोग्रेसिव जो है वो जब हुआ है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और फिर उसके बाद जो है वो वीकनेस हो गई है लोअर लिम्स में। तो ऑलवेज थिंक ऑफ अ कॉमन पैथोलॉजी फर्स्ट एंड ट्राई टू डिस्क्राइब अ कॉमन पैथोलॉजी फर्स्ट। Okay, sir. एक चीज, आपका एग्जामिनेशन अच्छा था, एग्जामिनेशन में आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली थी, इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द बैक एंड डीआरई। उसमें आपने बड़ी अच्छी चीजें जो स्टेट एग्जामिनेशन में पूछी थी वो क्रेनियल साइट की भी पूछी थी आपने, जो कि इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब जब भी आप लोग इमेज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग के दिस इज अ T1 weighted sagittal image of lumbar spine without contrast showing। ये जो जुमला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. वो I इसलिए got वो nervous इसलिए कि उस अगर वक्त. आप ये सारी चीजें नहीं पहले बोलेंगे, या दिस इज एन एक्सियल T1 weighted image without contrast of lumbar spine, I don't know about the level because there is no associated level image showing। ठीक है। ये दिस इज a T2 weighted sagittal image of the lumbar spine showing। अच्छा, जब आप फिर कोई भी कैनाल के अंदर की पैथोलॉजी को वो करें, तो कैनाल के अंदर की पैथोलॉजी को लेवल्स बताने के बाद उसके कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूर करें। आप कंपार्टमेंटलाइज जब तक नहीं करेंगे, आप जो है उस वक्त तक उन्हीं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। Yes, sir. तो अब आपके उसमें जो डिस्क्रिप्शन में वो था, यानी फ्लॉ था, वो ये कि आप यानी अगर एग्जामिनर के सामने दो इमेजेस लगी हुई हैं और आप टेबल की दूसरी साइड पे बैठी हुई हैं, तो आप या तो इमेज की तरफ इशारा करें, दिस इज दिस इमेज शोइंग। ठीक है, एक चीज। Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी चीज जो आपको डिस्क्राइब करनी है वो ये है कि जब भी सर्जरी डिस्क्राइब करें उसमें हमेशा पहले पोजीशन, फिर इंसिशन, और फिर उसको स्टेजेस में डिवाइड कर लें, सॉफ्ट टिश्यू स्टेज, बोनी स्टेज, ड्यूरल स्टेज और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का स्टेज। ठीक है। तो Yes, इसमें sir. आपको याद रहती हैं चीजें, और उसमें आप मिस नहीं करती हैं कुछ। ठीक, sir. कॉम्प्लिकेशन में हमेशा कॉम्प्लिकेशन का जो मैनेजमेंट आप कर रही होती हैं अपने यूनिट में वो डिस्क्राइब किया करें, इसलिए कि वो यूजुअली सही मैनेजमेंट होता है। ठीक है। इसमें किसी की पर्सनल प्रैक्टिस डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, इन एडिशन टू द बेसिक नॉलेज फ्रॉम द बुक। Yes, अच्छा, sir. अब मिक्रोपेपिलरी एपेंडिमोमास जो होते हैं वो सिर्फ कोनस से अराइज नहीं होते, वो फाइलम से भी अराइज होते हैं। Yes, sir. ठीक है फाइलम से भी राइज होता है. जी। तो इसलिए वो कोनस या कॉर्डा किसी भी पिक्चर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं अप टू द थीकल सैक, जहाँ पे थीकल सैक एंड होती है। ठीक। तो ये चंद ठीक, एक सर. टिप्स आपके लिए। ठीक, और सर. सबको मेरा फिर वही दोबारा से मैसेज है कि कोशिश करें कि केसेस ना देखें, ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इसका फायदा कोई नहीं होता केसेस पहले देखने का, अनलेस कि आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। फायदा कोई नहीं होता, ये बहुत तो खतरनाक काउंटर प्रोडक्टिव हैबिट है जिसका बड़ा नुकसान होता है इम्तिहान में। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने केस देखा हो। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर जो है ना, वो आप चंद क्वेश्चन से ये चीज ये डिराइव कर लेता है कि आपने केस देखा हुआ है, और आप खुद उस पे फिर ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे होते हैं केस देखने के। चलें, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम एक ब्रेक लें। आपका कोई सवाल है? नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैड नॉट सीन द पेशेंट और द डायग्नोसिस. तो अच्छा, चलें। मतलब दैट्स वन थिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट. इट्स जस्ट दैट कि जो कोनस की लोकेशन थी या द लोकेशन इटसेल्फ, उसमें मुझे श्वानोमा बोलना ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को फंसा दूंगी, क्योंकि श्वानोमा इज नॉट कॉमन इन दिस रीजन. श्वानोमा इज कॉमन इन सर्वाइकल रीजन एंड देन मे बी डॉर्सल. तो उस वजह से मुझे उस पर फिक्सेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन. अगर ये थोड़ा ओल्ड होता तो आई वुड हैव फिक्सेटेड ऑन द डीजनरेटिव फर्स्ट. सो आई अश्योर यू दैट आई हैव नॉट सीन द पेशेंट बिफोरहैंड. यू अच्छा, कैन मैं आपको बड़ा कंटिन्यू. डिस्काउंट देता हूँ उस पे कि अगर आप मुझे पहले कोई ये कहती हैं कि जी श्वानोमा है ये, मोस्ट प्रॉब्ली, और यस श्वानोमा सर. जो है वो उसकी वजह से पहले बैक पेन हुआ है, फिर उसके बाद जो है डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन हुई है, और फिर
उसके बाद जो है वो वीकनेस इन द लोअर लिम्ब भी होना शुरू हो The schwannoma patients that we have seen in the ward, sir, mostly if they have pain, तो वो unilateral radiation होती है अमूमन, या जो उनकी first presentation होती है वो unilateral होती है. This patient was saying कि उसको bilateral presentation है. तो अगर ये गया। थोड़ा older age group होता, तो क्योंकि मैंने nocturnal pain की history उन्होंने clear नहीं दी थी. उन्होंने कहा था कि लेटते हुए दर्द होता है. I did not correlate कि वो रात की वजह से है. तो हम्म। उसमें फिर अगर वो एक साइड पे पेन कहता तो आई वुड हैव प्रोबेबली फिक्सेटेड मोर ऑन schwannoma, या ओल्डर एज ग्रुप होता तो आई वुड हैव गॉन मोर फॉर द डिस्क. तो दैट्स द ओनली अच्छा, थिंग मैं आपको आई एक वो करेक्ट वांटेड कर टू देता ऐड. हूँ, schwannomas are not always from the dorsal spinal nerve roots. ओके. Schwannomas can as well be from the ventral spinal nerve roots. ओके सर. ओके. जी। और जब वेंट्रल स्पाइनल नर्व रूट से वो होता है ना, तो फिर वो यूनिलैटरल पेन नहीं करता। ओके. ओके सर. वो जो है वो इसी तरह से प्रेजेंट करता है जैसे कोई भी एनी अदर इंट्राड्यूरल। ओके. एंड schwannomas are at least 3 to 4 times more common than myxopapillary ependymomas. ओके सर. तो मैं आपको schwannoma पे आपके वो नहीं करता, यानी आपको आपके नंबर काटता नहीं अगर आप मुझे ओके पहले सर. schwannoma कहते हैं, इसलिए कि schwannoma एक कॉमन पैथोलॉजी है। Common pathologies, they are usually diagnosed first. They are usually considered first in the differential. So sir, does that mean कि if I get a similar case in the exam, I should keep schwannoma on the higher differential first? नहीं, इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से कि कॉमन पैथोलॉजीज को पहले बताएं। ओके सर. जो चीजें कॉमन होती है कॉमन होती हैं, किसी वजह से कॉमन होती हैं। डिस्क ज्यादा कॉमन होता है। अगर इसमें कोई डिस्क के अगेंस्ट ऑब्वियस बात नहीं जा रही है, तो आप एक वो कहें कि इट्स सेंट्रल डिस्क मोस्ट प्रोबब्ली ओके. causing compression of the caudate minor and ओके सर. therefore causing caudate minor symptoms. Disc is the most common pathology causing caudate minor syndrome, prolapsed lumbar disc. आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई, और वो है टीबी। जी सर. मैंने उससे हिस्ट्री ली बड़ी थी असल कॉमन है में. उसने मुझे हमारे फीवर की. हमारे मुल्क में और है बड़ी कॉमन टीबी। और टीबी है ना, बैक पेन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और वीकनेस इन द लोअर लिम्स, ये तीनों चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, इवन विद द इन द एब्सेंस ऑफ फीवर। जी सर. ठीक है, तो ये सारे वो डिफरेंशियल्स हैं जो कि टीबी कॉमन है हमारे मुल्क में, बहुत कॉमन है। डिस्क बहुत कॉमन है। तो अब अगर आप मुझे अनकॉमन चीजें पहले वो करेंगी, सजेस्ट करेंगी, तो मैं फिर सस्पिशियस हो जाऊंगा कि आप अनकॉमन चीजें पहले क्यों सजेस्ट करेंगे, वाई कॉमन चीजें पहले क्यों नहीं सजेस्ट कर रही। ओके सर. इसको एक किसी भी ऐसे और एनी अदर केस की तरह से देखें तो यूल यानी पहले क्या चीज ध्यान में आएगी? क्या पहले मिक्सोपेपुलरी एपेंडिमोमा ध्यान में आएगा? नहीं सर. आई मीन अगर इसको एज सरसरी एग्जामिनेशन और वो उसमें हिस्ट्री में मैं देखूं, तो मेरे जहन में पहले स्टिल एक सेंट्रल डिस्क ही आएगा, जी सर. लार्ज सेंट्रल डिस्क कॉजिंग कॉर्डाइक माइनर कंप्रेशन। वो इसलिए कि वो कॉमन पैथोलॉजी है, 40 इयर्स की एज में कॉमन पैथोलॉजी है, प्रोलैप्स लंबर डिस्क। ठीक है। ओके सर. सर कैन आई जस्ट आस्क टू क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे जी। लेकिन आई डोंट नो द आंसर्स ऑफ. यू सेड दैट माय न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट इज सेइंग कि आपके जो मॉनिटरिंग पोटेंशियल्स हैं दे आर ड्रॉपिंग. तो हम हम्म। यूजुअली एक तो वी स्टॉप द डाइसेक्शन और हम चेक करते हैं कि कोई इमीडिएट रिट्रैक्शन या कुछ और इंजरी तो नहीं है, एंड देन वी आल्सो चेक कि कहीं पे कोई और इशू नहीं है, एज इन इलेक्ट्रोड हट तो नहीं गए अपनी जगह से एक्सेट्रा. तो उसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें? इसके अलावा करना ही चाहिए, उनसे पहले ही पूछना चाहिए क्या सिर्फ इसी का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या बाकी पोटेंशियल भी ड्रॉप हुआ है। अगर बाकी पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग। ओके. अगर बाकी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुए हैं, इसी का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो अच्छा, अगर बाकी पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं तो क्या है, ब्लड प्रेशर सही है, टेम्परेचर ठीक है पेशेंट का, ये ओके. दूसरे कॉज, उसके जो पोटेंशियल ड्रॉप होने के दूसरे कॉज। बीपी सही है, ओके. टेम्परेचर सही है, जो वो गैसेज हैं वो ज्यादा तो नहीं मिल गई हैं उसको, तो ये जो है ओके. पोटेंशियल ड्रॉप होने का दूसरा कॉज है, मेटाबॉलिक कॉज जिसे हम कहते हैं। मगर उसमें बाकी पोटेंशियल भी ड्रॉप होंगे, तो फिर मैं अगला सवाल ये करता हूँ कि बाकी पोटेंशियल ड्रॉप हुए या नहीं हुए, या सिर्फ इसी का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सिर्फ इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो पैथोलॉजी इसकी है, ओके. लोकल है। और अगर बाकी सारे पोटेंशियल भी ड्रॉप हो गए तो इसका मतलब है पैथोलॉजी जो है वो डिफ्यूज है। ओके सर. और आपने मुझसे ये पूछा था कि मैं ड्यूरा क्लोज करने से पहले एक दफ़ा क्या करूँगी, वो मुझे नहीं समझ आया कि और क्या करना चाहिए. मेरा खोलने से पहले प्रिकॉशंस क्या लेंगे?
ड्यूरा खोलने से पहले आप प्रिकॉशंस ये लेंगी कि आप ट्यूमर से नीचे की ड्यूरा बाद में खोलेंगी, ऊपर की ड्यूरा पहले खोलेंगी। अगर आपने नीचे की ड्यूरा बाद में खोल दी, पहले खोल दी, तो होगा ये कि ऊपर जो सीएसएफ का हेड है वो उसको हर्निएट करा देगा नीचे। अच्छा, आप मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि मैं ड्यूरोटमी स्टार्ट कहाँ से करूँगी? तो मैं नीचे से ऊपर स्टार्ट करूँगी। आप नहीं, ओके। नीचे से ऊपर स्टार्ट नहीं करेंगे ना, ये तो समझा रहा हूँ। आप ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे, पहले ऊपर से खोलते हैं ताकि सीएसएफ का जो हेड है उसके ऊपर, जो सीएसएफ का बड़ा भारी हेड होता है उसके ऊपर, ट्यूमर के जी ऊपर, सर। आप जैसे ही ड्यूरा नीचे वाली खोलेंगे, नीचे का जो सीएसएफ का कंपार्टमेंट है वो खाली हो जाएगा, ऊपर का भरा हुआ है, फिर क्या होगा? ओके सर, इट विल पुश द ट्यूमर डाउन और पुश द रिट्रैक्शन के बाद। ट्यूमर एंड कैन कॉज फर्दर कंप्रेशन व्हिच यस कैन बी सर। डैमेज। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम ब्रेक लें, कोई उसका नमाज का ब्रेक ले लें। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm Dr. Mahajibin Meman. I'm so sorry there were network issues, so I couldn't join in time. जी जी Sir, thank you so much. We'll obviously take a break of जी namaz for 10 minutes and then, sir, we can join जी श्योर। after around 5:25. Okay, sir. ठीक है, अराउंड 5:25 डन। थैंक यू। Okay. Thank you so much. Sir. थैंक Thank यू you. सर। मालिक कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? जी जी। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप तावन करेंगे। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अहमद। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी। काम क्या करते हैं?
मैं मजदूरी करता हूँ, अच्छा, किस तरह की मजदूरी? वजन उठाने वाला काम। वजन उठाने वाला काम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है, तालीम? मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है, अच्छा। आप जो रोजमर्रा के काम है ज्यादा किस हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से करते हैं। अच्छा, अब जो आपने मुझे ये 3 शिकायत बताई हैं कि आपकी गर्दन में 6 महीने से दर्द है, ठीक है। और जो आपकी कमजोरी है बाएं साइड की जिस्म की, वो 6 महीने से है। और जो आपको ये सुन रहता है ये 5 महीने से, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कौन सी चीज शुरू हुई थी? ये गर्दन में दर्द ही शुरू हुआ था। सबसे पहले गर्दन में दर्द हुआ था। अच्छा, जी, ये बताएं कि गर्दन का जो दर्द है, ये मतलब आहिस्ता से शुरू हुआ था या मतलब एकदम शुरू हो गया था अचानक से? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। ये दर्द कहीं जाती है किसी बाजू में या ऊपर गर्दन की तरफ या सर की तरफ या नीचे कमर में? कभी कभी ये उल्टे बाजू में होता है दर्द। उल्टे बाजू में जाती है। अच्छा, ये बताएं कि ये दर्द किसी मतलब खास इसकी जो वो करेक्टर है वो कैसा है जी, किस नौइयत का दर्द है आपका? बस जैसे कोई वजन रखा हुआ हो। वजन रखा हो। अच्छा, इस दर्द के साथ कहीं आपको बुखार वगैरह तो नहीं है? जी नहीं। बुखार तो नहीं रहता? बुखार नहीं रहता। अच्छा, ये दर्द किस चीज से बढ़ जाती मतलब बिगड़ जाती है या ज्यादा हो जाती है, किस चीज, कोई काम करने की वजह से या कोई सीधा लेटने से? बस यही वजन जब उठाता हूँ तो तब दर्द बढ़ जाता है, आराम करता हूँ ठीक हो जाता है। लेटने से इसमें कोई फर्क आता है या बिगड़ मतलब बढ़ जाता हो लेटने से, सीधा लेटने से? कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, ये दर्द रात को ज्यादा होती है या दिन में किसी वक्त भी ज्यादा हो जाती है? वैसे तो वजन उठाता हूँ तो ज्यादा होता है, लेकिन रात को कभी कभी ज्यादा हो जाता है। रात को भी हो जाती है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये इस दर्द में किसी चीज से आराम भी आ जाता है किसी तरह से, कोई मतलब दवाई से या किसी ऐसे जिस्म के सीधा लेटने से या कोई ऐसी करते हैं? दवाई से आराम आता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जो आपकी बाएं साइड की कमजोरी है ये कैसे शुरू हुई थी? आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी या ये अचानक शुरू हो गई थी, कैसे शुरू हुई थी? ये भी आहिस्ता आहिस्ता। ये भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी। अच्छा, पहले कौन सी चीज मतलब कमजोर हुई थी, हाथ या टांग, कौन सी चीज पहले कमजोर हुई थी? पहले हाथ कमजोर हुआ था। ठीक है। फिर टांग कितने अरसे बाद कमजोर हो गई थी? 2-3 महीने के बाद, मतलब टांगों में ऐसा लगता है कि जैसे टांग थोड़ी भारी है। इतनी कमजोरी नहीं होती है टांग में, हाथ में ज्यादा अच्छा। कमजोरी है। अच्छा, ये जो कमजोरी है इससे आप रोजमर्रा के काम कर पाते हैं या चलना जी फिरना जी, वो तो। ठीक है हाँ, वो तो वैसे भी सीधे हाथ से लिखने करने का कोई और खाने का काम। लेकिन ठीक ये कि है। अच्छा, उल्टे चीजें कर जाती हैं। कि उल्टे हाथ से चीजें उठा लेती हैं, कप वगैरह या रोजमर्रा की जो भी चीजें होती हैं छोटी? उठा लेते हैं लेकिन गिर जाती हैं चीजें। गिर जाती हैं। अच्छा, चलने में कितनी दुश्वारी हो रही है, खुद चल पाती हैं सहारे से या बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे? चल लेती हूँ, लेकिन चलने में जो है कभी कभी बहुत ज्यादा कमजोरी होती है तो फिर बैठ जाता हूँ। चल लेते हैं, ठीक है, खुद ब खुद चलते हैं बगैर सहारे के? जी जी। अच्छा, ये बताएं वैसे कि सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी कमजोरी होती है। ठीक है। अच्छा, सर आप ये बताएं कि ये कमजोरी है बाएं साइड की, इसके साथ चेहरा भी कमजोर हुआ था उसी साइड का या दूसरी साइड का? नहीं, चेहरा नहीं कमजोर है। चेहरा नहीं कमजोर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएंगे, ये जो बाजू आपका बायां बाजू सुन्न हो गया, ये कैसे सुन्न हुआ था? आहिस्ता आहिस्ता किसी खास उंगली में या फिर कि कोई बाजू की कोई खास साइड पहले सुन्न हुई थी, ऐसा कुछ बताएंगे थोड़ा मजीद? पहले जो है वो उंगलियां सुन हुई थी, अभी पूरा बाजू सुने। पहले उंगलियां सुन्न थी, ठीक है, पूरा बाजू सुन्न, टांग नहीं सुन्न हुई, टांग सुन्न है अभी? नहीं, टांग सुन नहीं। अच्छा, जिस्म की दूसरी साइड सुन्न होना शुरू हुई है या नहीं? जी नहीं। ठीक है, चेहरे में कोई सुन्नपन?
नहीं। अच्छा, ये स्तनपान बढ़ता जा रहा है पहले से या एक जैसे ही? जी। ये स्तनपान पहले से बढ़ता जा रहा है एक जैसे ही है? पहले से बड़ा है। पहले से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जी ये पेट भी सोना है, पेट वाली जगह भी सोना है आपकी? धड़ भी सोना है कि नहीं सोना? ऐसा कोई कब पता नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि जो आपके छोटे वॉशरूम का और बड़े वॉशरूम का कंट्रोल वगैरह ठीक है, करने में कोई रुकावट तो नहीं महसूस होती या कोई ऐसी नहीं। शिकायत? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताएं कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी आपको? कोई गिरे जी हो नहीं। कहीं से या एक्सीडेंट हुआ हो? जी ठीक है। नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जोड़ों में दर्द वगैरह तो नहीं रहती कहीं, मतलब हाथ के जोड़ों में कोई सुबह उठते हुए कोई अकड़ाव होता हो हाथ के जोड़ों में, या घुटनों में, दोनों घुटनों में दर्द रहती हो, ऐसा कोई मामला? ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप कोई नशावर चीज, ये दवाई वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करते? जी नहीं। नींद ठीक आती है, भूख ठीक लगती है आपको? बस कभी कभी दर्द होता है तो नींद नहीं आती रात को, कभी ज्यादा हो जाता है। वैसे तो नींद ठीक है, ठीक है। भूख थोड़ी कम लगती है अब। ठीक है, खानदान में किसी और को ऐसा मसला तो नहीं है, मतलब कोई रसोलियां गिल्टियां और तो नहीं है किसी को? जी नहीं। अच्छा, आपको जिस्म में कहीं और गिल्टियां वगैरह या कोई ऐसे थोड़े पिंचियां हो, मतलब जल्द के नीचे या फिर वैसे जिस्म के किसी और हिस्से में? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपको कोई ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह ऐसा कोई मसला जिसके लिए आप लंबे अरसे से कोई दवाई ले रहे हो? कोई दवाई नहीं ले रहा, बस दर्द होता है तो दर्द की दवाई ले लेता हूँ। वैसे कोई चीज नहीं है। ठीक, इसके अलावा कोई दवाई नहीं लेते लंबे अरसे से, या किसी नहीं। खास बीमारी के लिए कोई दवाई? ठीक है। जी नहीं। किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? जी नहीं। अच्छा, कोई वजन कम हो गया हो या रात को ठंडे पसीने आते हो आपको? ठंडे पसीने नहीं आते, वजन पहले से लगता है कम हुआ है, भूख कम हो गई है। थोड़ा बाकी सा पता है कितना कम हो गया? बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगा? कपड़े तो नहीं? कब? जी? जी हेलो? जी, ऐसा लगता है थोड़े कपड़े ढीले हो गए हैं। कपड़े ढीले हो गए? अच्छा, ये बताएं कि कोई पुरानी खांसी या बलगम में, या बलगम में कोई खून आता हो? मौसम जो है उस हिसाब से होता है बलगम खांसी। वैसे तो नहीं। अच्छा, दिल की बीमारी के लिए दवाई तो नहीं लेती? टांगे सूजी तो नहीं रहती, या सांस फूलता हो बहुत ज्यादा चलने से? नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कितने बहन भाई हैं आप लोग, और घर आप लोगों का अपने? हमारे 4 भाई हैं और 5 बहनें हैं। ठीक है। घर आप लोगों का अपना है या किराए का है? किराए का है। ठीक है। सर, आई हैव सर डन फोकस्ड हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज अस्सलाम नहीं वालेकुम, आई आवाज आप। आ रही है? Sorry, म्यूट था क्या? जी, so can you list three possibilities at the end of your history which can explain these findings which you have already taken in the history? Sir, on the basis of my history, sir, and sir, why the first differential, sir, would be sir, a neoplastic lesion. Okay, any other? Sir, other is sir an infective cause, sir. Infective, any other? Sir, third is sir, disc, Disc. Okay, herniated disc, sir. herniated disc. Okay, so why have you put the neoplastic lesion first? Sir, because sir, the my history was leading to the diagnosis, like sir,
It's a pain worse with night or lying down. Pain was, sir, mostly worse at night. And sir, other thing that I get from the history, that was the numbness started slowly and The it patient told you gradually that progressed. the patient told you that the pain is usually worse when he does some physical work, Yes, sir. and He gave, it is sir. off and on present He, during the night. yes, sir. Mostly, sir, he gave both type of history. Pain worsen with the work and as well as at the night. So, sir, that's why I put sir neoplastic as well as the herniated disc in my sir differential diagnosis. Okay. So, what would be the major parts of the examination which you will be focusing on? Sir, sir, after consent and exposure, and sir, I will start from the lower limbs. I will start from the lower limbs, check the complete examination of the lower limbs. Sir, the main focus of my examination to locate the sensory level and rule out any, sir, upper cervical or cervicovertebral junction pathology in my examination. Upper So the main cervical focus will be. okay, any other? Any How other, would you sir, proceed with the examination? That's what I'm asking. How would you proceed with the examination? sir, first I will, after taking consent from the patient and proper exposure, I will start from the lower limbs. Sir, I will inspect the lower limbs from front and from the sides. I will see for the any visible scar marks, visible pulsation, or any visible deformity of the lower limbs. After that, sir, Okay. I will check the pulse on the both side. Sir, after that, I will check the bulk of the patient in lower limbs. After that, sir, I will check the power at hip joint, flexion, abduction, flexion, extension, and adduction and abduction at the hip joint. Sir, I will check the flexion, extension of the knee. I will, sir, check the at the ankle the dorsiflexion and plantar flexion. I will also, sir, check the dorsiflexion of the great toe. After I will compare bilaterally. Sir, after checking the power, I will check for the reflexes. Uh, I will check, sir, also for the tone. If the, sir, most likely my depending on my history, sir, I am suspecting a lesion that is causing once unilateral weakness. So I am hoping the tone, especially I will check the tone on the left side of the lower limb. If it is increase or decrease or it's normal, and then I will, sir, decide if it's increase, sir, I will find the sensory level. Sir, I will start after doing all the reflexes. And sir, I will check the sensory level from the lateral side of the toe for S1 and between the dorsal, at the dorsal surface, sir, between the two second and third metacarpals, metatarsals for the L5 and at medial malleolus, sir, for L4 at the medial side of the knee for L3. Sir, then I will go upward like L2. For L2, I will check the mid of the thigh. For L1 level, I will, sir, check at the inguinal ligament. Sir, then I will ask patient, can I remove her shirt a little bit above so I can check the sensory level. After that, sir, I will check at the D10 level. Then, sir, progressively D6. Sir, I will also be comparing both sides. And sir, similarly, I will proceed to the T4 level, then sir, T2, T1. If I found sensory level, sir, I will cross check on the other side. Is it the sensory level? Sir, after that, sir, I will start examination of the upper limb. If I, sir, find the sensory level, in the, sir, upper level, I will, sir, especially check the power of the left limb that is, sir, weak. How much it is weak? I will, after inspecting the both upper limbs, sir, I will check the pulses and the bulk of the upper limbs. After that, sir, I will check the power for C5
sir, I will check the power of the deltoids. For C6, sir, I will check the extent. Sir, I will check the long extensor of the arm. And for the C7, sir, I will check the extensors of the fingers. For C8, I will check the long flexors. And sir, for T1, I will check the abductors of the fingers, abducting movement at the fingers. Sir, after checking the power, I will check for the reflexes, bicep jerk, brachioradialis, sir, reflex. Sir, after that, I will check for the Hoffman. Sir, after that, I will proceed for the sensory examination of the upper limbs. I will start with the pinprick. I will start at as previously, if I have found the sensory level. I will, sir, further proceed with the proprioception or vibration sensory system. I will check at the bony surfaces, or sir, I will check proprioception by the any distal joint movements. Ask the patient to close his eyes. I will check if he can tell me appropriately the sense location of the joint in space and time. And then, sir, I will proceed with the back examination of the, especially, sir, for the upper cervical spine. If there is any tenderness or temperature changes. Sir, after that, I will, sir, check for the lower basal cranial nerves. And then, sir, after that, sir, if I have time, I will, sir, check for the higher mental function and other cranial nerves. And sir, at the Would last, you sir, like I to will do ask. any particular examination in the general and the systemic examination? Sir, in this case, I will check sir lymph nodes, as well as I will check the saddle incision, as well as I have forgot the planters. Sir, these three things I will further do. And sir, on the I will check the sir auscultate the chest. I will, sir, auscultate the chest for. Any particular point in the general physical examination? Any particular point? Sir, and, Okay, let's show him the findings on the physical examination. cerebellum intact. Cerebellum intact. Motor examination power, sir, 4/5 on the left upper limb and 4 plus on the left lower limb. Right side is normal. Right side power normal. Sir, sensory examination hyposthesia below C4. Pronator drift negative. Planters bilateral upgoing. So now, So what do you think is the location of the lesion? sir, it's below C4. Sir, it's at the level of C4 and above. Lesion is at the level of C4 and above. C4 and above. Okay. What are your three main differentials at the end of this history and examination? Sir, based on the history and the findings, sir, my first differential is, sir, neoplastic. Which neoplastic? Sir, that would be, sir, it could be a schwannoma, and it could be also be meningioma. Okay. Any other? And sir, any other thing, sir? Sir, it could be a herniated disc, sir. Herniated disc. Any other? And sir, other things, sir, and extradural lesion, sir, like infective Extradural pathology. infective pathology, for example. Sir, it could be
Patient have, sir, history of weight loss, sir. It could be, sir, tuberculosis. Tuberculosis. Okay. How do you justify these diagnoses and their order? Sir, Why have you put neoplastic lesion first? What is the reason of and which neoplastic lesion you told me? sir, it could be meningioma, schwannomas. Meningioma. And why meningioma? Sir, patient had history of, sir, 6 months, long history. 6 months long history. Okay. And What it's, is the sir, is most slowly, common spinal tumor in a 50-year-old person? Most common spinal tumor in a 50-year-old person. sir, it is, sir, astrocytoma. I'm repeating my question. What is the most common spinal tumor in a 50-year-old person? Sir, I don't know exactly, sir. You don't know. Okay. Then Yes. you are justifying the diagnosis of a spinal meningioma in this case. You say the first point that you said was a 6 months history. Yes, sir. Any other? And sir, it is, sir, any other like a unilateral, sir, weakness. Unilateral Some weakness. Okay. are, sir, suggesting the lesion is, sir, arising from one side and compressing the cord to the contralateral side. Okay. Then why it is causing weakness of one, numbness of one limb after the weakness of Uh, one side of the body? Sir, I could not comprehend right now. Maybe, sir, fibers of the arrangement of the fibers distribution, like something Which like, sir, the fibers? growth of the, Which fibers? sir, the arrangement of fibers, sir, in sensory system of the sensory system, the cervical fibers What is the are, arrangement of fibers in sensory system in the spinal cord? sir, cervical are the lateral most, then, sir, thoracolumbar, and then are the, sir, sacral fibers. So I think, sir, as lesion is growing, the cervical or fibers are the first to be compressed. Which sensory pathway are you describing? No, posterior. In which the cervical is the lateral most and the sacral fibers are the medial most. That's what you said. Yes, sir. Sir, Okay, how do you justify the sir, diagnosis of spinal TB? sir, sir, there was a history of, sir, weight loss, as well as the, sir, pain was the first symptoms that started. Sir, these two clues. Why the TB is causing numbness in one upper limb? Sir, I could not justify. Okay, so how will you manage this patient? Sir, first I will, sir, admit the patient, then I will do, sir, baseline workup, blood workup. After that, sir, I will get the X-ray or the CT cervical spine, and as well as the, sir, MRI cervical X-ray and spine. CT cervical spine. Why Yes. X-ray of the cervical spine? Why X-ray? And why Sir, CT? it's sir, Why it's X-ray an and why CT? X-ray. Justify. Why X-ray? Does Sir, he have any history X-ray. of trauma? Does he have any history of trauma? No, sir. No. When do you commonly perform cervical spine X-rays in non-traumatic conditions? Sir, when the
pain is more than 6 weeks. The chronic pain In chronic to pain, do you start with cervical spine X-rays? Sir, we start usually Okay, with why the CT? Why CT? sir to see bony anatomy as well as for the surgical planning of the. Why do you want to see the bony anatomy now? In the first place, you are just starting the investigations. Why do you want to see the bony anatomy? Sir, as By the way, infected what is the pathology. basic? By the way, what is the basic neurological problem with this patient? Does he have neuropathy? Does he have a brain lesion? Does he have myelopathy? Or does he have myeloradiculopathy? Do you Sir, understand he what I'm has talking about? myelopathy. Yes, sir. Sir, brain Myelopathy? lesion is excluded. Yes, sir. He has Brain lesion is myelopathy only. excluded. He Yes, has myelopathy yes, sir. only. He does not have Sir, myeloradiculopathy. pain radiation was sir not there in history. Okay. So, any other investigation that will order? Sir, I will order the MRI cervical spine with IV contrast, plain and also as well as with IV contrast. Why IV contrast? Sir, to rule out sir neoplastic pathology. Okay. Let's see the MRI of cervical spine with IV contrast. So these are the two images. Image on my left and image on my right. Which image would you like to describe first? Sir, first I am describing the image on the sir left side of the screen. Sir, Image this on is the left side of the screen. Okay, yes, sir. please Sir, describe. this is yes, sir. This is sir T1 weighted images of the cervical spine, and it is sir of the cervical spine. Sir, there is a lesion at the level of sir C3 and ये C4. व्यू कौन सा है? Uh, yes, sir. T1 weighted image तो हो गया, cervical spine भी हो गया, व्यू कौन सा है? Yes, sir. Yes, sir. This is sir sagittal T1 weighted sagittal images of the cervical spine, sir. Sir, there is a lesion at the C3 and C4 lesion that अच्छा, is कंट्रास्ट के sir I साथ है या नॉन कंट्रास्ट है? T1 weighted में तो sir this कंट्रास्ट भी is दे a देते हैं ना? नहीं देते? sir T1 so yes sir T1 weighted plain image, sir. The चलेगा, sir नॉन lesion is कंट्रास्ट. चलेगा. Okay, so yes, it's showing lesion. that is sir hypointense अच्छा, and ये इमेज मेरे पास से गायब हो गई है for some reason और उसकी जगह पे तस्वीर आ रही है इनकी. क्यों ऐसा हो yes रहा sir है मेरे slide पास? sir स्लाइड मेरे वो हो पास गया. भी है sir. ठीक है, वो स्लाइड Sir, I cannot see. डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मैजवीन जरा स्लाइड शेयर कर लें दोबारा. चलें, आप वो उसी को भी याददाश्त से अपने डिस्क्राइब करते जाएं उस इमेज को. Yes, sir. The first image on the left side of screen, sir, there was a ISO intense to the cord lesion that was sir behind the C3 and C4 that sir आइसो I could इंटेंस not. टू द कॉर्ड. ओके. And Okay. sir, on the second image on the right side of the screen, that was a T2 sequence of T2 weighted images, sagittal images of the cervical spine. Sir, the lesion was hyper intense. Sir, I could not remember. I saw a hyper, हाइपर था. but there was a lesion. हाइपर था. Sir, हाइपर याद था. नहीं है देखना. याद नहीं है, चले ठीक है. ISO, आइसो hypo. था, मैं बता देता हूँ. आइसो इंटेंस था. आइसो इंटेंस ऑन T2 weighted images. Yes, sir. Sir, that was. Sir, the screen is loading, sir. जी That was चलें ISO देख. intense and yes, behind the 3C3 and sir C4 vertebral level,
Sir, that was pushing the 3, 4. spinal cord. That was, sir, pushing the spinal cord posteriorly. चलें जी, ठीक है, ये आइसो टू हाइपर इंटेंसिव, चलें। Sir, yes, sir, that lesion is, sir, pushing the spinal cord posteriorly. Sir, now I would like to get the contrast images. कंट्रास्ट and to इमेजेस, see- ओके। अब ये कौन सी इमेजेस है? Sir, this is the first image on the upper side of the screen on the left side. Sir, this is T1 contrast images. These ones are T1 axial images of the cervical spine, and these are the, sir, contrast images. Sir, the lesion is taking इसमें heterogeneously कंट्रास्ट कौन सी है और contrast. नॉन कंट्रास्ट कौन सी है? The first, sir, कंट्रास्ट कौन upper सी है, one नॉन is the कंट्रास्ट? contrast. Sir, अपर upper one लेफ्ट कॉर्नर पे contrast one. कंट्रास्ट है, अच्छा, और Yes. लोअर राइट कॉर्नर पे? Lower left, sir, I think it's a T1 contrast with the fat suppression images. तो अपर राइट कॉर्नर पे क्या है? अपर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है? Sir, अगर वो भी ये T1 contrast है। राइट लोअर कॉर्नर पे T1 कंट्रास्ट है, तो लेफ्ट अपर कॉर्नर पे Sir, क्या है? नीचे, sir, on the left upper corner, that is also T1 contrast, but the fat signal is not suppressed at the upper image. Sir, this I am. फैट सिग्नल तो यूजुअली सप्रेस करते हैं ना उसमें, कंट्रास्ट इमेजेस में, या नहीं करते? Sir, हर image में I think शायद suppress नहीं करते। क्यों? तो कैसे पता चलेगा कि Confirm वो नहीं। फैट है या कंट्रास्ट है? Sir, ये on the upper image I see the hyper intense fat all around the cut in every plane or in the subcutaneous plane. Sir, तो in फिर the ये कौन lower, सी इमेज है? the fats. जो फैट सप्रेस नहीं हुई है? Yes, sir. चलें, लीजन डिस्क्राइब करें, लीजन किस तरह का है? Yes, sir. Screen is again, sir, went off. चलें, लीजन Please. पे आ जाए, आगे एक्सियल इमेजेस पे आ जाइए। जी, लीजन डिस्क्राइब Sir, on the upper image, the lesion is arising from the from the left side of the canal, and sir, I think it's going into the foramen as well. ओके, सो व्हाट काइंड And ऑफ लीजन आर यू? sir, after seeing this, sir, specifically this image, sir, this could be, sir, schwannoma. ओके, Because it's, sir, is extending into the foramen. It could be, Okay. sir, arising from the root, sir. हाउ वुड यू मैनेज दिस केस? Sir, now, sir, I will get the CT cervical spine. CT cervical spine. Why CT cervical spine? Sir, now I want to see the bony anatomy more clearly. Why do you want to see the bony anatomy? Answer CT, sir, I can see a lot of things like is there any foraminal dilatation, as well as, sir, the strength of the bone, as well as, sir, the any destruction in the bone, sir. These three things I will see, sir. Okay. Okay. What else? Sir, You want to- No. sir, sir, I will get the I can't hear you properly. of the cervical spine to, sir, see the position of the vertebral anatomy, sir. Vertebral artery. Okay. Which you can't see in the on the MRI. For vertebral Sir, artery, which CT will you have to do?
Sir, here in this image, I cannot appreciate well. You can't see the vertebral artery on this. Why No, do you want to see the no, vertebral sir. artery? Sir, because the vascular supply of most of these tumors come from the vertebral artery, and I will also want to preserve my surgery. Okay. How will you proceed with the management? Sir, after doing all the investigation, I will take the informed consent from the patient. I will explain and I will explain the complications, possible complications. Then, sir, I will shift the patient to What does informed consent include? the informed consent, sir, includes the procedure in layman terms or in the terms that patient can understand, and as well as, sir, it includes the possible complication of the surgical surgery. Any other thing that you include in the informed consent? Sir, पेशेंट ये पूछता है आपसे, डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन ही इसका इलाज है, इसके अलावा भी कुछ हो yes, सकता है? yes, sir, I will include the about the anesthesia, sir, like GA. Sir, other treatment options, I will also include the treatment, other treatment modalities. Okay. How That will you these are proceed with the also surgery? possible. How will you proceed with the surgery of this patient? Sir, after getting the anesthesia fitness, and I will, sir, shift the patient to the operation theater. Sir, I will. What else do you want to do before surgery? You said fitness and then shift the patient to the OR. What else do you want to do before surgery? I will, sir, arrange the blood for the patient. Blood And sir, I could not get. okay, you don't remember. Okay, proceed. Sir, after that, after putting the patient on the electric lifts, I will shift the patient to the, sir, operation theater. After, sir, making the prone position. Prone position. Sir, after making the yes, sir, and padding of the pressure points like forehead, at the shoulders, as well as knees, and as well as the feet, sir. After, sir, padding all these pressure points, sir, I will mark the incision under, sir, under, sir, fluoroscopy. Okay. One level above and one level below the lesion, my extent of the incision. Sir, after Okay. the after the skin incision and soft tissue dissection, sir, I will perform the, sir, subperiosteal dissection of the musculature muscles. And Sir, sir, after that, I will, sir, do the bony workup. I will do, sir, laminoplasty. laminoplasty. Yes. Okay. Anything else? Sir, Next part. after, sir, after bony workup, sir, I will again, first I will clear the field, and for prepare for the, I will bring in the microscope, and, sir, I will open the dura under microscope, and, sir, I Okay. will then, sir, yes, sir. Okay. Next what? You bring the microscope, you open the dura, and Sir, then I will, sir, take up the dura. After that, yes. sir, after that, sir, I will, sir, identify the tumor. Okay, you have identified the tumor. Next what? Sir, I will I will, sir, give incision in the tumor, sir, capsule. I will take a biopsy. Okay.
Okay. After that, sir, after that I will complete. I will, if I sir, I will devascularize the capsule of the tumor. After that, sir, I will remove it in a piecemeal fashion, slowly, Mm-hmm. to avoid Mm-hmm. sir, cervical cord traction or pressure. Sir, after complete removal at the end of the tumor, I will be careful to watch or for the vertebral artery, sir. तो वर्टिब्रल आर्टरी से पहले If क्या I, चीज देखेंगे ट्यूमर के sir, रिमूवल में? उससे पहले sir, I will check if the tumor, sir, as tumor is extending into the foramen, I can, sir, do अब जो फोरामिनल पार्ट आपने sir, I can, निकालना है ट्यूमर का, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? sir, I need to, sir, remove. I have to do foraminotomy, sir, or फोरामिन remove नॉटमी, to the अच्छा part. फोरामिन तो पहले ही चौड़ा हुआ है, तो अब उसके लिए क्या चीज, बाहर तो जा नहीं रहा ना, ये तो फोरामिन के अंदर ही अंदर है, फोरामिन तो पहले ही चौड़ा है। अब फोरामिनल पार्ट जो है ट्यूमर का, वो किसके साथ अटैच होगा? Sir, it will be attached at the roots. Yes, sir. I will, sir, identify the roots and carefully तो रूट से dissect सेपरेट करने from में the क्या roots. चीज हेल्पफुल होगी आपके? Roots, sir, I will from the roots. Nerve retractor, sir. नर्व रिट्रैक्टर। Uh, अब रूट को डिफ्यूजली अटैच है रूट के साथ और उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो अब उससे सेपरेट करने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? um, sir, I could not tell, sir. चले आगे चलें। Sir, after the excision from the root, carefully, if after I can left a tumor behind if it is diffusely adhere to the root, and after that, sir, I will, कितना ट्यूमर छोड़ना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना ट्यूमर छोड़ना है, कितना निकालना है? sir, चले sir, ट्यूमर आपने जाना वो निकाल दिया, पूरा ट्यूमर निकाल दिया, चले रूट के साथ जो चिपका हुआ था वो भी निकाल दिया, अब आगे चले। sir, after that, I will, sir, secure the hemostasis, and after that, sir, I will, sir, close the dura in a watertight fashion, sir. After that, I can, sir, put bioglue on the dura, and after that, ग्लू sir, आप रूटीनली डालते हैं, इसका मतलब है आप रूटीनली ग्लू डालते हैं? routine में तो नहीं, sir. If I am suspecting चले आगे CSF चले, leak, after that, sir, I will put the laminoplasty bony flap behind आगे चले। again, and आपकी after आवाज that, मेरे sir, ख्याल I वीडियो will, कुछ इंटरप्ट हो रही है, sir, कनेक्शंस के इश्यूज after है। sir, I can, after the bony sir, closure with after that, sir, I will put the drain in, I will put the drain, after that, sir, I will loosely close the musculature of the patient. After that, sir, I will close the fascia of the patient in a double layer. After that, चले sir, I आपने will क्लोज close the कर दिया, skin. पेशेंट उड़ गया, पेशेंट को आपने सीधा भी कर लिया। पोस्ट ऑपरेटिवली Yes, जो पेशेंट है उसकी लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन 0 हो गई है। left elbow flexion. आपने उसको एग्जामिन किया, लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन इज 0, Yes, बाकी वही प्री ऑफ स्टेटस में है। सब क्या हुआ है? it's a sir, sir, I could not, did not use the intraoperative monitoring, but I will, sir, now I will reassess the patient. I will examine the patient. पेशेंट को एग्जामिन कर लिया बेटा आपने, उसकी लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन मैंने बताया ना आपको 0 है। Zero, sir, I will get the immediate post-op आपके MRI, ख्याल में sir. क्या रीजन है लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन 0 होने की, क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल में? Sir, other reason can be, sir, the compression.
during the sir Compression. procedure. Compression किस चीज का? Sir, compression in the axilla, sir, during the procedure. also. लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन, बाकी लिम्ब वैसा ही है जैसे प्री ऑफ था, लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन 0 हो गई है। Left elbow. क्या हुआ है आपके ख्याल में? Sir, सिर्फ the other left elbow possibility flexion is C6. Sir, C6 root is being during the procedure, sir. ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या हुआ है? um, maybe sir, root edema or compression. एडीमा कंप्रेशन के अलावा भी कुछ हो सकता है? आपने पूरा टीमा निकाल दिया था जनाब रूट का, तो वो भी निकाल दिया। The other thing, sir, can be तीसरे दिन पेशेंट को वूंड से वाटरी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्या yes, करेंगे? sir. On the third day, sir, after sir, first I will sir I will put reinforcement sutures. रीइंफोर्समेंट सुचर, अच्छा, I will- और I will observe for the few days if it stop or not. If it sir does not stop, sir, I can put lumbar drain, sir. अच्छा, पेशेंट की जो पोस्ट ऑफ डायग्नोसिस है उसमें न्यूरोफाइब्रोमा आया है, आप किसी और कंडीशन के मुताबिक Yes, sir. सोचेंगे कौन सी? Neurofibroma. Yes, sir. If it's neurofibroma, sir, it's neurofibromatosis type 1. न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 किसमें ज्यादा कॉमन है, स्पाइनल न्यूरोफाइब्रोमा टाइप 1 में या टाइप 2? Spinal neurofibroma. Sir, I could not recall, sir, right now. Sir, it's आप इसको type 1, I रिकॉर्ड think, sir. हैं जी, टाइप 1 में ज्यादा कॉमन है। Yes, sir. Neurofibromas are more common in type 1s. अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमा में शॉनोमा में क्या फर्क है? The first sir difference is on the sir histological difference. I could not remember right now the pattern of the sir fibers, and the other thing is sir the it's sir its origin. The tumor region are different. Sir, in neurofibroma, sir, it arises from the nerve outermost layer, sir, I think, and the schwannomas arise from the sir Schwann cells. अच्छा, ये बताएं कि एंटनी ए और एंटनी बी हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में क्या फर्क? Sir, in Tony A, the fibers are compactly more dense or compactly arranged, but in Antony B, the fibers are loosely arranged. अच्छा, पेशेंट ने अब आपसे सवाल ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, ये जो मेरे उल्टे बाजू में जो ये हरकत अचानक से पैरालाइज हो गई, ये सही हो जाएगी? आप उसका जवाब कैसे देंगे? Sir, पेशेंट कंसर्न है, उसने उसके उल्टे हाथ में yes, एल्बो sir. उल्टी हिल ही नहीं रही है बिल्कुल। पहले तो उसकी वीकनेस थी, मगर अब वो एक जो एल्बो की जो पावर है बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। वो पूछ रहा है कि ये सही हो जाएगी? Sir, it will improve, but it will take time, sir. I will tell the patient. इट विल इम्प्रूव बट इट विल टेक टाइम, हाउ मच टाइम, एंड विल इट इम्प्रूव? कितने चांसेस है इम्प्रूव होने के? The chances are, I think, sir, it's due to compressive pathology or the other neurofibroma in the arm. If it's due to that reason, the chances are sir, less than 50%, but it will
इम्प्रूव आई थी। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा कोई तरीका था कि जिसके जरिए कि ये होने से रोका जा सकता? सर आई डिड नॉट नो, आई डोंट नो यार सर। रहने दीजिए। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। यूजुअली अगर आपके साथ कोई एग्जामिनर कॉम्प्लिकेशंस तक आ जाए तो इसका मतलब है आपका वाइवा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मेरा बिलीव ये यस है कि जो टाइम ऑफ द कैंडिडेट है वो उसका कस्टोडियन एग्जामिनर होता है। तो यूजुअली मेरी कोशिश ये राइट होती है कि किसी तरह से कैंडिडेट को कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट तक लेके आ जाऊं। ठीक है। यस अच्छा, अब मुजाहिद, मेरे ख्याल है आप पास नहीं हो सके हैं। उसकी रीजन ये यस है कि आपके काफी सारे ड्रॉप आउट्स हुए हैं और बड़े क्रिटिकल ड्रॉप आउट्स हुए हैं आपके। राइट आप सर अगर शुरू से हम चलते हैं तो शुरू से आपने न्यूप्लास्टिक लीजन को पहले रख दिया था और उसमें भी आप जो है वो मेनिंजियोमा को पहले रख रहे थे, जो कि यस बड़ी सर अनयूजुअल सी बात है। अगर मुझे कोई ट्यूमर सोचने का मौका दे 50 साल के किसी फर्द में, तो मैं पहले मेटास्टेसिस सोचूंगा। और अगर वो एडवांस यस स्लोली प्रोग्रेसिव है तो फिर वो प्रोस्टेट टाइप की मेटास्टेसिस जो कि स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। सही। राइट सर दूसरी बात, आपने पहले कहा जी एक्सरे और सीटी स्कैन। एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं करवाते। जो नॉन ट्रॉमेटिक राइट कंडीशन सर है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्स्ट चॉइस है वो एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं होती है। दुनिया भर में स्टैंडर्ड है एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन विद कॉन्ट्रास्ट। इसलिए कि आप अगर कोई न्यूप्लास्टिक पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो विद कॉन्ट्रास्ट करवाएं। अगर आपके टॉप मोस्ट डिफरेंशियल में डीजनरेटिव है तो इट्स नॉट यानी रॉन्ग टू से कि मैं एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन विदाउट कॉन्ट्रास्ट करवाऊँ। ठीक है। राइट जैसे सर कि अगर आप डीजनरेटिव पैथोलॉजी कहते हैं, फेयर इनफ, मैं उसमें आपको डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट इसलिए दूंगा कि आपने टॉप मोस्ट डिफरेंशियल में अपने डीजनरेटिव डिस्क डिजीज या डीजनरेटिव डिजीज रखी हुई है, जो कि एक मेटास्टेसिस से ज्यादा कॉमन डिजीज है और इसमें कोई रूल आउट नहीं हो रहा है उसको, यानी जो डीजनरेटिव डिजीज है इसमें कहीं पे भी रूल आउट नहीं हो रही थ्रू आउट। सही। राइट सर तो अगर आप डीजनरेटिव डिजीज पहले रखते हैं तो मैं आपको एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन विदाउट कॉन्ट्रास्ट पे भी डिस्काउंट दे देता। मगर आपने स्टार्ट किया है एक्सरे से। एक्सरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एग्रीड। एक्सरे इज नॉट द फर्स्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर आपको यानी राइट सर चॉइस दी जाए तो। तीसरी बात, अ, आपने जब सर्जरी प्लान कर रहे थे तो आप C4 से रीजन स्टार्ट हो रहा है, आपने कोई वेंटिलेटर या आईसीयू में कोई बुकिंग नहीं डाली इस पेशेंट की। आपके ख्याल में अगर ये इसको राइट कॉर्ड इंजरी होती है तो क्या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में जा सकता है ये? यस सर सर्वाइकल लीजन यस सर जी, मोस्ट तो लाइकली आपने कोई दे गो आईसीयू में कोई बुकिंग नहीं डाली। एग्जाम में इसकी भी बड़ी काउंट, ये इस चीज को भी काउंट करते हैं कि आप कितने सेफ सर्जन हैं, आप सेफ्टी को कितना ऊपर राइट लेकर आते हैं। आप सेफ सर्जन नहीं है। दूसरा ये कि आपने न्यूरो मॉनिटरिंग साथ नहीं ली, राइट जबकि आपको पता था प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन पे कि ये नर्व रूट के साथ चिपका हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नर्व रूट हो सकती है। आपने न्यूरो मॉनिटरिंग राइट अरेंज ही नहीं सर करवाई पहले। तो न्यूरो मॉनिटरिंग अरेंज जब करवाते हैं आप, तब तभी तो आपको पता चलता है कि नर्व रूट से डिसेक्शन में आप ट्यूमर को जब डिसेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे रुकना है आप तो बगैर नर्व रूट के राइट सर डिसेक्ट भी कर गए। सही है। तो आप सेफ सर्जन नहीं है, इसका मतलब है। अगर आप सेफ सर्जन नहीं है तो आप पास नहीं हो सकते इम्तिहान में। आपका सेफ सर्जन होना बहुत जरूरी है। हर चीज जो है वो नॉलेज पे ही नहीं चलती है, सेफ्टी पे भी चलती है। ठीक है। आपका सेफ सर्जन होना इसलिए जरूरी है कि आपको फील्ड में जाने के बाद सेफ्टी भी प्रैक्टिस करनी होती है, सिर्फ स्किल्स प्रैक्टिस नहीं करनी होती। तीसरी चीज, जब भी आपको न्यूरोफाइब्रोमा कोई वो कहे तो न्यूरोफाइब्रोमा के बाद आपके जहन में पहले ही आना चाहिए कि क्या इसको कोई शॉनोमा शॉनोमा स्पोरेडिक बहुत कॉमन है, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा स्पोरेडिक कॉमन नहीं है। तो उसके साथ जरूर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के मुतालिक सोचें। तो ये मेन फ्लॉज थे आपके उसमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो पासिंग लेवल तक आ पाए। ठीक है। जी सर जी अच्छा सर जी, और क्या आपके सवाल हैं?
सर ये रूट रूट अगर ये जिससे मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर इफ दे आर अटैच टू द रूट एंड इट्स न्यूरोफाइब्रोमा, सर मतलब कितना ट्यूमर छोड़ सकते हैं रूट पे? ये उसी पे तो डिसाइड करेंगे आप, न्यूरो मॉनिटरिंग पे तो डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ रुकना है। आपने तो न्यूरो मॉनिटरिंग यस सर, साथ ली नहीं ना, जब आपने न्यूरो मॉनिटरिंग साथ नहीं ली तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है आप। राइट सर। न्यूरो मॉनिटरिंग तो आपको लाइव वो बता रहा होता है ना कि आपको रुकना कहाँ है। सही है। और कोई सवाल आपका? सर अगर कोई, यस सर, सर लेमिनोप्लास्टी को सर बाद में क्लोज करने के लिए कोई स्क्रू यूज करते हैं कोई, जिस तरह मतलब स्कल पे प्लेट्स वगैरह होती हैं छोटी छोटी, लेमिनोप्लास्टी को पोजीशन बैक टू पुट बैक एट इट्स ओन और मतलब कोई सवाल तो ओरिजिनल नहीं है आप? पोजीशन? सर लेमिनोप्लास्टी करते हुए सर उसको बाद सॉरी, में कोई, आपकी आवाज साफ, लेमिनोप्लास्टी को सर क्लोज, आपकी आवाज साफ नहीं है। यस सर सर लेमिनोप्लास्टी को सर क्लोज कैसे करते हैं? कोई प्लाज में कोई प्लेट नहीं, से आपकी आवाज सर मुझे साफ करते नहीं आ हैं रही है, बंद, आपकी या जो वॉइस है काफी इंटरप्टेड है, आई कांट कॉम्प्रिहेंड। सर लेमिनोप्लास्टी मेरे को ख्याल नेट सर के इश्यूज क्लोज हैं आपके करते हुए एंड। कोई, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी अभी आवाज आ रही है, अस्सलाम बताइए। वालेकुम सर। सर लेमिनोप्लास्टी को क्लोज करते हुए कोई स्क्रू से क्लोज कर देते हैं, या सिर्फ मस्कुलेचर क्लोज करने पे बाद में वो सर बोन मतलब खुद ही जुड़ जाएगी या फ्यूज हो जाएगी? स्क्रू या प्लेट्स का कोई नहीं, वो इस्तेमाल उस होता है पे सर मैं आपको लेमिनोप्लास्टी को डिस्काउंट दे क्लोज? सकता हूँ कि जी वो काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होगी अगर आप लेमिनोप्लास्टी करते हैं। लेमिनोप्लास्टी के, मतलब सर सॉरी दोबारा बोलें। बोन बोन सर बोन क्लोजर कैसे करते हैं एंड पे सर? कोई सुचर से या कोई बोन प्लेट्स क्लोजर जो लगा के? आपकी वो, जो आपकी क्रेनियोटमी में जो प्लेट्स यूज करते हैं उसी से बोन क्लोजर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर जी मेहजबीन, जी सर। तो यहाँ पे इनको कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सेकंड सर लॉन्ग केस को। बाकी अगर किसी और के कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर थैंक यू सो आपने मच सर। इतना टाइम निकाला सर, वी आर रियली रियली ग्रेटफुल, एंड बहुत ज्यादा जो है हमने भी सीखा ऑब्वियसली। इतनी सारी चीजें हैं, मैं भी अपनी लेकिंग्स भी देख रही थी कि मुझे भी इतनी सारी चीजें जो हैं अभी तक भी जो है वो अ, सर से जो है वो सीखी हैं, नई नई सारी चीजें। तो सर आप सब आपका लोगों के बहुत लिए मैं एक बहुत ही शॉर्ट निकाला सा सर। एक लेआउट दे दूं। लॉन्ग केस में हिस्ट्री के आखिर में आप अगर दो जुमलों में उसकी फाइंड हिस्ट्री की फाइंडिंग्स को अगर वो नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपने अच्छी हिस्ट्री नहीं ली है। और उन दो जुमलों के नतीजे में अगर आप तीन प्लॉजिबल डिफरेंशियल्स नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है आपने अच्छी हिस्ट्री नहीं ली है। और आपको एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ पे है प्रॉब्लम और क्या है प्रॉब्लम, इतना आइडिया हो जाना चाहिए। तो उस वक्त होता है जबकि आप उस पे फोकस रहते हैं, फोकस हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। और आपका जो डिस्क्रिप्शन है यानी उसका इमेजेस का, वो उस तरह से नहीं है जैसे एग्जाम में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक जुमले में कि दिस इज T2 weighted sagittal image of cervical spine showing, इस तरह का जुमला पहले एक जरूर आना चाहिए। आप लोगों में ये वो डेफिशिएंसी है कि इस तरह का जुमला पहले नहीं आता। ठीक है, जी सर। थैंक यू। थैंक यू so सो much मच once सर, again थैंक sir. यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाय। सर. Okay, so Dr. Mujahid and Dr. Kanwal, you both were great today. और सर इज वन ऑफ द वेरी सीनियर एग्जामिनर, और जो रियल टाइम एग्जाम होता है उसमें भी द एग्जामिनर इसी तरीके से आपकी टेस्ट करता है, आपकी नर्व्स, आप कितने कॉन्फिडेंट हो हर अपने आंसर के हवाले से। कोई भी फंबल नहीं करनी है, ईच वर्ड दैट यू अटर देयर उस पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, एंड यू नीड टू जस्टिफाई इट। ओवरऑल यू पीपल बोथ वर वेरी गुड। डॉक्टर मैजवी। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगी
कि डॉक्टर कमल तो जो स्पेशली शी वाज वेरी गुड, तो जानते हैं उसे, and she didn't know the diagnosis, but sir kept on saying that she knew the diagnosis, but we know that she didn't know. बाकी डॉक्टर मुजाहिद वाज आल्सो वेरी गुड, बस थोड़ी सी जो है चीजें जो लैकिंग है सर ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करके बताई, पे थोड़ा काम करना होगा। इसके अलावा माशाल्लाह बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड। इसी तरह से मैं बट यही कहती हूँ कि जितना आप लोग वॉलंटियर करेंगे उतना सीखेंगे। अब जितना फायदा डॉक्टर कमर और डॉक्टर मुजाहिद को हुआ होगा, जिन्होंने एक्टिवली वॉलंटियर नहीं किया उनको इतना नहीं फायदा हुआ होगा, उनको अपनी लैकिंग्स नहीं पता चली। तो इसी वजह से मैं ज्यादा इंकरेज करूंगी कि नेक्स्ट वीक में जो भी टॉक्स के इवेंट शॉर्ट केसेस टॉक्स के स्टेशंस पे आप लोग खुद आके वॉलंटियर करो, कि आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलेंगे तो आप उससे सीखोगे, ताकि आप मिस्टेक्स वो एग्जाम में नहीं करो। तो इसी के साथ फिर कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक का मॉड्यूल फिर हम 1-2 दिन में अनाउंस करेंगे। किसी को कोई सजेशन देनी हो, कोई चीज पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, और डॉक्टर बाबर ये एक और भी थी कि अगर ये लोग चाहते हैं कि एक दिन में टॉक्स और एक लॉन्ग केस हो और दूसरे दिन पे शॉर्ट केसेस और एक लॉन्ग केस, अगर ये फॉर्मेट इनको सही लगता है तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, बट आज जैसे गेस्ट एग्जामिनर ने सर ने 2 केसेस ही कर दिए एक दिन पे, तो आई सही। थिंक that would be very beneficial for the participants. Still, it's their इनका कोर्स है, और देखते हैं कि ये क्या कमेंट करते हैं। If they say कि एक दिन में एक लॉन्ग केस होना चाहिए, बिकॉज स्टेमिना ऑब्वियसली चाहिए होता है लॉन्ग केस में, सो एज दे से। डॉक्टर मेजबीन, ठीक आपने है। प्रेजेंटेशन बनाई थी क्या इसकी अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन? मैंने हाँ बनाई थी, लेकिन सर ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें बता दी कि मुझे अब वो बिल्कुल जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन छोटी लग रही है। न्यूरो मॉनिटरिंग पे मैं बता दूं, 2-3 स्लाइड्स ही हैं। हाँ, मैं पूछ लें कि लोगों में स्टेमिना है और ज्यादा इतना डाइजेस्ट हो नहीं सकती इंफॉर्मेशन जितनी मिली आज। 5 मिनट लगेंगे। हाँ, डॉक्टर चले, सलमान इज ऑल्सो सेइंग यस। सो ठीक है चले। लेट्स क्लियर इट ना, ये क्वेरी बार बार हर कोई पूछ रहा होता है। ओके। प्रेजेंटेशन आप शेयर करें, मैं करूं डॉक्टर मेजबी? ओके। कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? ओके। Okay, so this is the question that most of the examiners ask, especially in the intramedullary tumors, कि आप माइलोटमी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? So माइलोटमी करने के लिए obviously we'll go from the midline. Midline के लिए we need to find the median sulcus. अब median sulcus को intraoperatively देखने के लिए obviously we are going to see it under the microscope. उसके 2 तरीके हैं। Number 1, either follow it from the normal cord, ऊपर से उसको फॉलो करते हुए आए, एंड देन वी कैन अप्रिशिएट के वेयर इज द मिड लाइन। द सेकंड वे इज कि आप डॉर्सल रूट एंट्री जोन्स को देखें ऑन द ईदर साइड, और द मिडल पोर्शन ऑफ इट इज द यूजुअली द मिड पोर्शन। इसमें जो थर्ड क्लू होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज जैसे आप इसमें सेंटर में देख रहे हैं कि देयर इज अ टॉर्शियस वेन दैट इज रनिंग। सो इस वेन को फॉलो करते हुए यूजुअली द वेसल्स जो हैं दे कन्वर्ज ओवर द मिड लाइन। सो टॉर्शियस वेन को फॉलो करेंगे तो दैट इज द मिड पोर्शन, और मिड लाइन से जब आप माइलोटमी करना चाहें तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। Very quickly, I'm going to talk about the intraoperative neuromonitoring. अब intraoperative neuromonitoring, it's just a small question जो लाजमी तौर पे आपसे पूछा जाएगा when you are doing any brain tumor और the spinal tumor. So इसके बारे में आपको just एक overview होना चाहिए। तो first of all इसकी जो
electrodes हैं, they are connected over the brain, the motor cortex area. motor area में हम इसको locate करके इसके electrodes लगाए जाते हैं, and दूसरे जो electrodes हैं वो periphery में लगाए जाते हैं at different levels, depending upon हम sensory या motor evoked potentials को check कर रहे हैं. इसके पॉइंट्स वगैरह इतनी डिटेल में नहीं पूछते हैं, जस्ट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट. सो फर्स्ट वन इज दी SACPs, सोमेटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल. दे आर इजी टू कैच थ्रू आउट द केस. आप मॉनिटर कर सकते हैं सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप सर्जरी व्हेन यू आर ऑपरेटिंग द वेस्टिबुलर श्वानोमा, तो उसमें बायर्स की जो ब्रेन इवोक पोटेंशियल्स हैं वो उसमें से क्वेश्चन ये लाजमी पूछते हैं. बहरहाल इसमें जो है देयर इज नो रोल ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग्स, सो नॉर्मल एनेस्थीसिया ड्रग्स में भी इवन यू कैन मॉनिटर इट. एंड जैसे डॉक्टर कंवल ने बताया, शी आंसर्ड इट वेरी वेल कि SACPs दे आर नॉन स्पेसिफिक फॉर एनी मोटर डेफिसिट. तो sometimes the SACPs are deranged but the patient will have no motor deficit, and vice versa, the patient might have the no changes in the SACPs but motor deficit patient को later on हो सकता है. So this is not a very specific, especially when you are working on the spinal tumors. Spinal tumors के लिए we can go for the motor evoked potential, it is more specific. but इस केस में आपको जो है पेशेंट को डीप आप सिडेट नहीं कर सकते हो, स्पेशली विथ मसल रिलैक्सेंट, जो इनिशियली सिर्फ एट द लेवल एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन दी जाएगी, एंड प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन दी जाती है पेशेंट को कंटिन्यूअसली. इट इज डन इंटरमिटेंटली, कंटिन्यूअसली हम इसको नहीं कर सकते हैं. वी गिव द पोटेंशियल, मतलब स्टिमुलस देते हैं, एंड एट दैट टाइम वी चेक के द स्पेसिफिक मसल्स जहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया होता है उसमें हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं कि इज इट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग और इट इज सेम. अच्छा, SACPs हो और मोटर इवोक्ड पोटेंशियल हो, दो चीजें आप इसमें रट लीजिए. एक है एम्पलीट्यूड. इफ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बिलो 50%, so it means some damage has been caused. Second thing is the latency. Latency more than 10% अगर increase हो जाए तो that is suspicious. The third one is the D waves. D waves is actually are the direct waves. What is the difference between motor evoked potential and the D waves? मोटर इवोक पोटेंशियल में आप स्टिमुलस देते हो ब्रेन में, ब्रेन कॉर्टेक्स पे, एंड आप पेरीफ्री में पर्टिकुलर मसल में आप देखते हो कि ट्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है एक्टिविटी. बट इन डायरेक्ट वेव्स आप जो है एक्टिविटी देखते हैं एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एपिड्यूरल स्पेस में जो है इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड रखा जाता है, and so it is very beneficial in the spinal tumors. Again, the advantage of D waves is कि इसमें आप even अगर deep anesthesia भी दे देते हैं patient को, because you are not checking it in the periphery muscle twitching, तो brain and spinal cord के बीच ही ये coordination को define करता है. Again, 20% decrease in the amplitude should alarm the surgeon, and 50% decrease signifies that there is definite damage. अच्छा, इसमें एक और क्रिटिकल क्वेश्चन जो आज सर गौहर जावेद ने भी पूछा कि इफ द एनेस्थेटिस्ट टेल्स यू और द न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट टेल्स यू कि वी आर ऑब्जर्विंग एक्टिविटी चेंज इन अ पर्टिकुलर मसल और इन अ पर्टिकुलर मायोटॉम और डर्मेटॉम, सो व्हाट यू विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to stop the procedure and you need to confirm कि is it because of any artifact. There are multiple artifacts, उस पे भी एक टॉपिक दिया हुआ है. इफ आई कैन फाइंड, मैं उसकी एक चेक लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा. उसमें ये होता है कि आपने एनेस्थेटिस्ट से पूछना है कि इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इज फाइन, और इफ यू आर यूजिंग, पेशेंट की पोजीशन तो चेंज नहीं हो गई, कोई इलेक्ट्रोड जो है अपनी जगह से हिल तो नहीं गया, और कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, इवन द माइक्रोस्कोप, इस तरीके के जो गैजेट्स हैं, इवन दे कैन मॉडिफाई द रिजल्ट्स. वंस यू हैव चेक ऑल दी, पूरी चेकलिस्ट आपने देख ली है, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, एंड यू आर श्योर कि देयर इज अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड, सो इन दैट केस यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. मतलब आपको सर्जरी जो है अबॉर्ट करनी पड़ती है उस टाइम पे, एंड यू कैन नॉट प्रोसीड बेसिकली. अच्छा, इसके लिए एक और टेस्ट भी होता है, दैट इज स्टेगनेरा टेस्ट. स्टेगनेरा टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को आप जो एनेस्थीसिया है
वो लोअर डाउन पे लेके जाते हो, इतना लोअर डाउन पे कि इफ यू गिव द कमांड टू द पेशेंट और उसको कहते हो कि कोई मसल को मूव करे and patient can move that muscle, so that is a confirmatory test, Stegner test. But I think इतना deep में जाने की जरूरत नहीं है. You should just focus on these three things: D waves, motor evoked potential, and SSBs. If you people have any question or query, you can ask. ओके ओके फाइन. अच्छा, ये जो सर ने पूछा था, दिस इज C5 पैल्सी. इस पे भी ग्रीनबर्ग में एक पेज लिखा हुआ है पूरा, स्पेशली इन द केस ऑफ सर्वाइकल सर्जरीज जब हम कर रहे होते हैं. सो बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैक्शन या ऑब्वियसली नर्व रूट कैन बी डैमेज, बट यूजुअली इट इज temporary. It is a temporary palsy, and that is going to improve with time. You just need to reassure the patient. Physiotherapy करवाते हैं, steroids दे सकते हैं, and spontaneously ये खुद ही सही हो जाती है. C5 palsy के नाम से है, cervical के at the end of ACDF, if I'm not wrong, उसकी complications में दिया हुआ है. Okay, all right. So thank you so much, everyone. Dr. Majabin, are you there? जी जी, आई एम हियर. मेरे So छोटा सा let's. बस मैंने भी छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी. इसमें कुछ खास नहीं है, बस जो एक इम्पोर्टेंट स्लाइड मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है. ठीक है, इसमें जो है सारे लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है. ठीक है, रंगाचारी में बहुत अच्छा है. दूसरा ये जो कोर टेक्निक से वहाँ पे आपको अप्रोचेस अच्छी मिल जाएंगी. तो बस मैंने कहा कि ये एक स्लाइड दिखा दूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको कहाँ से पढ़ना है. ग्रीनबर्ग के चैप्टर में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है स्पाइनल ट्यूमर्स, तो इनसे रेफरेंसेस बाकी बुक से, स्पेशली रंगाचारी, वो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू एवरीवन. Okay, thank you so much, everyone. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़.